Hi, welcome everyone. In this video, I'm going to, in this video and the training section, we are going to work on understanding what is prompt engineering and how we can uh, improve our writing skills. So before we start, is there anyone who needs to share their experience regarding um, their experience regarding that they tried very hard, but most of the time they are not able to properly uh, what you call it properly picking up how to talk to ChatGPT so that they can get favorable results. If you have any query or if you have anything that you want to share, you can share right now so that we can move forward. Can you get my voice? Sir, sir, whenever we want to take any codes in R or Python or even in Stata, Mhm. sometimes we want to check certain assumptions and the provided code is actually inaccurate. अगर Mhm. हम R में उसको करें तो वो रिजल्ट दे रहा होता है और Stata में करें तो वो फर्क रिजल्ट दे रहा होता है. Yes, yes. So the major thing is that it means their understanding ability is different. So we need to understand how to make sure that there's a standardization in understanding ability of both tools. So prompt engineering has one objective that we make sure that they understand what you want to say. So we will go through that too. So let's start officially and people will get join and those who are a bit late, they will be able to get the recording. Meanwhile, I am moving forward. Please open any GPT that you are regularly using. You can open Chat GPT or Copilot or any that you regularly use because I will start with one activity and then we will move forward. So first activity that we need to discuss is okay, that is pre-testing. Okay, so pre-testing that you already given you as a homework where I shared you one website where for 2025 all the call for papers are shared. You can use that as a launching pad for your research ambitions for this year, or you can use any other sample that you want to create, okay, from your own idea. So one thing while I'm going move forward, first thing that you need to do is you have 5 minutes. In that time, kindly open any journal that then any call for paper that you want to target or any document that you want to prepare, any topic that you want to do work on, open ChatGPT and ask it to write an introduction and store your prompt and the output for later discussion. Okay, so I will give you 5 minutes and then we will do another activity on ChatGPT and then we will move forward. Meanwhile, we will wait for others to join. So when you do this activity, please raise your hand in so that I can see in the participants. And when every most of you have done it, we will move forward. So if you have any questions, meanwhile, you can ask related to what task has given to you. Please raise your hand when you have done it. Please keep raising hands so that I can keep a count. And make sure you keep a record so that at the end we will do some fruitful discussion on it that what improvement that you are able to do now after this training. So you will have a before and after uh, output and you will see how much improvement there is. Good evening, sir. Yes, yes. Sir, I'm having one question that whenever we try to give a prompt to any GPT, Mhm. sometimes they give us
according to the reply which we are expecting. Yes. And after some time in the same chat, if we enter another prompt, their reply is not in the sync with the previous reply. Yes. So And we have, that's what prompt engineering is about. That you need to create something that is recreatable. So okay, if you don't know the prompt engineering, it means sometimes by luck you get the correct answer, but if you do it again, you will not get the similar answer. So it's not recreatable. So true, so sir, true, sir. so it means by recreatable, I meant to say is that suppose you want to write a research paper and you get a good introduction first time, but next time you are not getting a good introduction. It means your performance will not be consistent. Or if you have done some experiment after following ChatGPT's process, and you are submitting it for funding, and they want to check your process, when the problem will come is that it will give different flow and the outcome will be different. So it means it will invalidate your assumptions. So that's the thing. So that's we will study later on, that what is the problem behind your. So we have two queries. One, your, that it gives sometimes good answers, sometimes does not, and other query was that different GPTs give different results. So these are two example of inconsistencies when the prompt is not standardized, or the way it should be. Okay, so please raise hand when you have done it so that we can move forward. Only two have done it. So we don't want to wait too long because then we need to discuss other things. Okay, four people have done it. Five has done it. Okay, so I think one or two are left. Six have done it. Okay, so majority have done it. Those who are left, kindly do it by the end so that we will come back to it. Now, the another assignment, another task that you need to do is, for that, just open a new chat so that it does not connect with your current discussion. I will give you a task and then we will talk on it and then we'll move forward. Okay, so I will lower the hand. Okay, so next task is that you can see this output shown in the commas. What you have to do is that you have to tell ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, or any GPT that you regularly use to create the same output. Or you cannot create the same but similar output, but you cannot copy paste the prompt, the output here. So without copying this output, try to tell your GPT to create a similar paragraph. So do your activity. So take another 5 minutes, do this activity, and then we'll talk about how successful you were and what could be done more. So the limit is that uh, you cannot directly insert this paragraph. You can pick some information, or you can use your way of talking, and let's see what you get it. Okay, there's another comment and I will go through it when we will be talking about the prompts. So you have 5 minutes. Meanwhile, I will go through the comment. The comment is that what about plagiarism and genuine innovation? So technically, ChatGPT has an ability to break through plagiarism. So it will not be a plagiarism because everyone is using their several softwares like Quillbot to avoid plagiarism. So it means AI can write a paragraph in a way that is uniquely written. But is it uniquely genuine innovation or not? Its answer I will tell you later on. Please raise hand when you have already done this output.
You have to try to ask ChatGPT or Copilot to try to write a paragraph that is similar to this paragraph without copying and pasting the exact paragraph. And then let's see what you tell to the ChatGPT or Copilot so that it can understand what you want to see, and how you tell him that how near you can come to this paragraph. If you don't understand my task, you can raise hand and ask the question. Otherwise, try to do it as quickly as possible. सर मैंने लिख तो लिया है, लेकिन इसके अंदर वो जिस तरह आपने किया हुआ है उसने मुझे 3 पैराग्राफ में दिया है। मैंने So इसको लिखा कि just tell him to make one paragraph. So do it again and make it one paragraph. So you see, it's one paragraph. So you can just add another point that make it in write in only one paragraph. Yes, Miss Sidra. Sir, it has given me one paragraph and it is quite closer to what you have given Okay. here, because I asked to write about mission, vision, and core values of Faisal Islamic University. Okay. Okay. What you have to do is that in the Google class, there's a link where you open and you paste your input. I will show it in the next slide. It's called Padlet. So open that and paste your prompt and your output over there so that I will show it on the screen. And when everyone will share, I will discuss. So the comment is please clarify. So clarify, I will clarify it again that this is an output that you want to create. Okay, luckily you know a tentative output. In real life, you sometimes you don't know what kind of output that you want, so you are hopeful, writing in a hope that what we want. But here you have an output. Your task is to try to write a paragraph that is similar to it using any GPT without copying and pasting it. So you have to recreate. So that you can understand here from this activity you will understand what are the do's and don'ts. Okay, so everyone has is on the everyone is on the chat GPT side. Yeah, so can I move to the next slide, or do anyone has to have to is on this slide? And so please raise hand if anyone who needs to make sure that I don't change the slide. Okay, nobody wants to be on the slide, so let me move forward. So in the next slide is that I have already shared the Padlet link in Google Class, or you सर मैंने can. पैडलेट पे सर वो शेयर किया है आउटपुट। Okay, I will open it up when majority have done it. So what you have to do is that open the Padlet or scan the QR code and share your uh, output with the prompt that you have asked, and then what was the output. So please raise your hand when you have done it. सर ये पैडलेट क्या है सर, और इसको Padlet is इनकॉर्पोरेट कैसे it's करते हैं? just a platform where you give your feedback, and I can see and everyone's feedback I will see, and then I will share it on the screen. So while you are सर इसको sharing. गूगल क्लास में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? So in the Google Class, I have only given a link for, I have created a dashboard. I have created a board, and its link I have just shared in the Padlet. Okay. So let me open the Padlet. So this is the Padlet that you are seeing. So everyone, so 3 people have shared their outputs. So see, so I have just created an you can call it a Padlet, empty pad, and I named it prompt and output, and I got the link. This is the link that I then shared it to the within the Google class as a link, as a material. Then I added a link here. So this way,
I shared the material. So there are 3 output already there. So let's say there are 3 there. So I will wait another 2 minutes and so when you open the Padlet, you will see option of and when you double click it, it will show how to write. So you will just write your response here, and you can also if you want to hide your name, there's an option here. Then you can do it. Okay. So somebody is writing already. So Padlet link, I will share it in the chat, but you can get it from the Google Class. I will share it here. So if you click in the chat, you will open this link. Or you can see the link above, padlet.com/Numan/prompt and output, and then some random code. Those who are not able to open this, please raise hand, means they are still behind. Otherwise, I will just start talking about it. Okay? और सर इसके बारे में भी बताइएगा कि ये तो हमारे रिस्पॉन्सेज है ना, Yes. अगर फर्स्ट में आपको यू आर फेस्ड विद दिस पैराग्राफ, तो आप इस पैराग्राफ में से कौन कौन से वर्ड सिलेक्ट करते और उनको Yes. सिलेक्ट When I will talk about the mistakes in the prompts, you will understand what to do. So that will be my answer, that what will I do. Okay. So my answer is, first of all, I will tell you what were the mistakes in your paragraphs. In the next slide, I will tell you what should have been done and what I will do if I have to do it. Okay. So 4 people have done it. How many are left? So I will start with Salman's. So let me make it half screen and bring the output so that we can compare. So in Pakistan, some universities excel in providing holistic education that combines with yeah. So I'm reading it. So he says that some universities. So your paragraph is not in first person, means you are not representing Faisal University. Your paragraph is like you are as a third person telling that there are very good universities, and in that maybe and maybe I don't see the university name. So the major issue is that subject should be there. your paragraph does not include the university name. So it means Right. that first problem, the context. So context is not there. And second issue, that your paragraph is not in first person. First person means you can see this paragraph. It is written in terms of somebody representing or Faisal Islamic University writing itself. Your paragraph is about some third person writing about the education system and how it should be. Now we'll come towards Karambir. So Karambir, let's talk about. He did one good thing, that he made sure that university name should be there. So it means what I needed was that you should also paste your prompts. So in the comment below, please paste your prompt so that I can also give a feedback what was missing in the prompt. So Karambi's focused on academic excellence, ethical leadership. Okay, so where is ethical leadership here? Okay, so his paragraph has one good thing, that it is in first person. Okay, but other thing that I will talk about it later on. It looks like it's a bit longer than what our paragraph is, but we'll see. Let's go forward to, I don't know who it is, so it's Fabulous. And then please add a paragraph about mission and vision and core values of Faisal University.
So this is the prompt. So there's an example. So this prompt has one good thing that it has mentioned the university name. So officially known as, so what problem? That its name is not this. Is International Islamic University, IIUI. Okay. So there's one problem that the prompt did not understood uh, that it should be a first person. Okay, so let me go back to him again. So this is one problem. Then another thing, the problem on the other side is that is same as with the Karambir. Okay, so I want you to help me write about facilitation with the form of yeah. So he did, Karambir did one thing good here is that about the Islamic University which is in Pakistan. So this line helped him to make sure that it is first person. So for Salman, write about university in Pakistan providing holistic education. So you didn't told which university. So it's not, then it means your output is not an advertisement statement that could be placed on a website. It's more like the ideal situation what should be, but it's not representing. Right. Okay. General. Yeah, it's more general. It's not like the Islamic University will copy it and put it on their website to advertise their mission and vision. Okay. It Now, needs to be specific about which we yeah. are So trying the to do. context is context requires first of all the name of the thing. So it's a university Right. name. So Karambi did one thing good that he gave the context. Then he also did one more thing that he told the writing in 100 words. So it means he also limited it to stay within boundaries. Unlike the other one, Miss Sidra, who said that the name is this, so it's too long. Then we go towards I don't know, playful bad. So write a description of highlighting one of the emphasize on it. So this is all the prompt. So with what is okay, highlighting one of the emphasize on dedication. So what is your output? So you need a playful bad did not provide the output. I think this is the prompt. Then Miss Samra, the Kurwar is so university name is not correct. And when you share the prompt, I will see what is the problem, and then it's okay. But the major common issue which is there, I will tell you in the next slide. Then there's adventurous. Please, if you share your prompt, then I can give you better feedback. This is a suitable size. This prompt is more nearest to the size of what we expect. Okay, and it has okay. So we will talk. So this has very less problems, but the major problem is coming on the next slide. So then about the playful bat and yeah. So for the one of a leading private university, okay, and providing holistic education. Yeah. So what he did, what this person did, that it tried to incorporate some of the words that are already there. So what did happen was that it was more nearer to what we need. So the adventurous writer had an impressive formal introduction of Faisal Ismail University and core values. So how does ChatGPT know what are the actual core values? So when you are writing a mission and vision statement of a university, you already know what are its core values. And if you say on its core values, so how do ChatGPT will know? Unless that web university is very popular and ChatGPT already knows, maybe you write for MIT, it will know. Now we go for Miss Arsh. So her prompt, I think it's somewhere here. So it's more like a literature view. There are citations here, and I think you pasted something else. So you need to share your prompt so that we know what's the problem, or maybe you mistakenly pasted some other paragraph. It's more like a literature review of some other topic: climate variables, food security. Miss Harsh, can you hear Miss Harsh? So Tahir, please share your prompt too. So I Yes. yeah.
Please change it so that we can talk about it or add another one. So Tahir, major thing is that the university name is wrong, and I didn't provide here. So it's 1980. Maybe this university is not started yet. So and then I have not provided the city. So you are providing in the capital city some extra value, extra information. Okay, some extra information is good if it's the task is given to you. Uh, so Ms. Samra comment was kindly provide core values and vision in the form of paragraph. So so it's I think it's not a complete prompt because how do it know that it is Islamic International Islamic University? Okay. Ms. Hara, are you going to share it again? Oh, or should we move forward? If you are not able to do it, I can maybe delete it and you can do it again. Can you hear my voice? Yes, sir. Okay, Miss Saira, I think if she has shared it, then otherwise we'll come back to the topic at the end. सर आवाज आ रही है Yes. या सर जब मैंने फर्स्ट पे प्रॉम्प्ट दिया है तो सर उसमें मैंने यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन किया था लेकिन वो मुझे पैराग्राफ फॉर्म में नहीं आ रहा था Okay, तो okay. मैंने 36 उठे दिया है तो उसने यूनिवर्सिटी का नेम ही चेंज कर दिया Okay, so because you have to write the prompt again, complete one. Okay, okay. Now let's move forward and I will tell you what was the problems. Okay, so we will open up the share screen again. Are you able to see the slides and the comments? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Both sides, both screens, yes? Yes. Okay. So let me open up the slides again. So let's be with me and I will ask few questions and try to answer it whatever you understand. Okay. We did it. So quick warm up. Can you answer the following questions? Okay. What is the university dedicated to? Anyone who can answer? Providing holistic education, sir. Was it written in the slide? Let's go back. Yes, yes, sir. Yes. Let's go back. So not only providing holistic education, regardless to race, creed, and financial standing. Okay. Right, sir. Next question is, okay, most of you have joined it again. So let me continue. So first question comment was that what was the dedicated to? So only one did remember the exact word, but it was still incomplete. Second question is, let me get it again. Yeah. The second question is, what were the core values? So the university name is not correct here. So what were the core values? So the core values, Integrity थी, sir. yeah. So core values were these: integrity, humility, and excellence. Okay. So nobody picked up or remembered. So next is by upholding core values, Sanvi University. The name is not correct because the name is the Faisal Islamic University. Sports, discovery, advancement, transmission, application, knowledge meets the needs of. Anyone who knows what should be the word here? So societal and global excellence में रखा. Needs of the society and Okay, global. let's go back. The society and the global community. Okay. So what do we learn here?
So first thing that we've learned here is when you are trying to recreate something that, so first of all, you need to properly read that paragraph. So when सर you एक सवाल wait a minute, when you read a paragraph, you will notice some of the important patterns or important words that are there, and then you make sure that those important patterns or words should be there in the prompt. So if we come back, so if you read this, so first thing you need to notice is that it's specific name, and then specific order of these words, specific order of these words, okay, specific order of these words, and specific order of these words. So it means most of the biggest mistake that the chat GPT or GPT user does is that it blindly trusts the GPT by telling them, giving them half cooked or even less than half cooked prompt to expect a world quality answer. So, so that was the major issue. So few were able to make sure that the prompt gives the answer include is Faisal Islamic University, and it is in Pakistan, and it is private university, means they were able to they picked the first line correctly. Okay, but others were uh, closely there. Okay, but I don't expect you to make an exact paragraph, but um, in this example, the output was already there. So you need to make sure the important words of the output should not be what do you call it, synonymized. Some other synonyms should not be used. Now, if you have any question here, do ask. Otherwise, I am hopeful that you have realized that what is the one of the major issue that currently people face when they are communicating with ChatGPT. If you have any question, you can ask now. Sir, I'm having one question. Yes. Uh, Whenever we use a word file, then Yes. Grammarly give us prompts that this is the correct sentence. This is how we can restructure the sentence. Yes. Yes. This is the mistake in the tense. Yes. So while using this chat GPT or any GPT, Yeah. how can we make sure that it can help us with the prompts or correct us if Yeah. we are going in the wrong direction? Yeah. So I will tell you in the there is an example for that. Okay, In sir. this slides, there is an example for it. Any other question, or should we move forward? Okay. So we did the quick warm-up activity. Now, what is prompt engineering? So prompt engineering is a practice to design and optimize prompt to effectively communicate with AI. Means it's a way to talk to them, such as Claude, DAL-E, ChatGPT, to generate desired outputs. So we need to means these prompts can give you anything. If you say hi, it will give you a paragraph in response. But you need to make sure that you tell it in a way that they give you you give structured instructions, adding context, and sometimes iterate, maybe talk again and again to maximize the AI's performance for the specific task. Means you need to make sure that it understands the task so that you can expect a good answer. Okay, so key feature of prompt engineering is that if you have a good prompt, it will give you a precise answer. There is no useless words there. Okay, sometimes some words are extra, or maybe you want it to be write as formal writer, but it is not writing formal, it is informal. Sometimes you want informal or formal. Means many people I have seen what they do is they use GPT to properly write an email response, so that and make sure that it is a formal response to a formal people and informal response to informal people.
positive response, positive, optimistic response when required, and not optimistic response when not required. So then adaptability. So when you have a good prompt, the AI will adopt to it and make sure that it stays within the limit. Then iterative process. When you talk to it again and again, it will understand what you're trying to say and then it will adjust it. So it means if your prompt is not good or not structured, you will take more time to teach ChatGPT what you want to get. But if your prompt is good, you will go near to what you need in the first go and then you go in the detail. Domain specific expertise. So none of you, while you're writing the prompt, gave a domain-specific expertise. Who is writing? Is an English expert writing or an educationist writing? Who is writing? So you need to give a role to ChatGPT. So none of your prompt had a role. So it will give that you are an educationist or a marketer, marketing expert, or you are an IT expert. So that is another gap. So now, next slide, we talk about what we can tell to ChatGPT. So these are some examples. What we can say, we can give direct instructions like generate a explanation of how AI works. We can specific contextualization, provide details on how AI, impact of AI on programming. So we can go tell him to go in detail. We can do a comparison that contrast and advantages and disadvantages of renewable energy. So it's a comparison. And then number 4, create a scenario that imagine future where humans colonize Mars, discuss societal challenges. So you give a scenario which has not happened yet. Role play or simulation. You are a historical figure, write a letter expressing your thought on modern technology. So you give him a role and then tell him to do something. Progressive inquiry. Start with the basics of neural networks and then delve into advanced applications. You tell him to follow a inverse pyramid, give him broad topic and tell him to narrow down. So these are roles, tasks that you can tell. Then 7th is temporal sequence request. So chronologically narrate the major events. So you tell him how IR, Industrial Revolution 1, then Industrial Revolution 2 and 3 and 4, so on. Then 8, opposing viewpoint exploration. So you tell him to argue. For some people, what they do is upload research paper and tell him to find weaknesses or oppose it or give critical review. Then problem solving framework. So means you want to say, I want to make sure that my website does not crash. Give me step by step checklist how to check if the website is working or not. So software bugs. Then number 10 is multi-turn conversation. To tell him to talk to you one by one. So simulate a dialogue between a student and a teacher discussing the quantum physics concept. So it will in this prompt it will not give you answer directly, rather it will talk to you. It will give you some answer, then ask you some questions, then based upon your answers it will improve the answer. And then there's a conditional scenario. Describe potential outcomes if the renewable energy sources are widely adopted within a decade. So you give it a condition, or it's like a policy implication. Then personalized inquiry. Share your thought on specific topic, drawing from your own experiences and opinions. So you say, so you talk about any issue and get the viewpoints. Future prediction. Envision the technological landscape and societal challenges in the next 50 years. So projections. Meta instructive prompts. Craft perfect. So this is the thing that you asked about. Generate a prompt that effectively encourages creative story writing about the future technologies. So you are actually telling him to create a prompt, but will it be successful, or what are the issues here? We will talk about it later on. So you said, how do we know how to write a good prompt? This is the starting point. Abstract concept clarification. So clarify the concept of machine learning in simple terms for the non-technical audience. So it will simplify, or it can teach you, make a course and then start teaching you. So these are 15 starting points or 15 ingredients that
or 15 starting points that you may use, or the functionalities of GPT that you may use in nowadays. But in reality, it can be a hybrid of many functions out of these. Okay. If you have any question here, you can raise hand. No question. Let's move forward. सर ये जैसे अब यहाँ Yes. पे एक आपने एग्जांपल दी ना नंबर 14 मेटा इंस्ट्रक्टिव प्रॉम्प्ट की Yes. कि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है जनरेट। Yes. अब मैंने जैसे लिखा था आई रोट राइट अबाउट, Hmm. तो जनरेट और राइट ये इस तरह का भी हो सकता है सर, Yes. अप्रोप्रिएट It is a starting point. It is a starting point, but what's the problem here? We will talk about it in the examples later on. So, in this statement, what is an issue? So, you tell him to generate a prompt that effectively encourages, but you didn't tell him what is his role. Who is he? So, for that, you should have told him that you need to have given him a role, that you are a prompt engineering expert, that role, or a teacher who or a technology expert. So the role is not there, so that you might understand. So that was a problem in your statement too. You can write a word create, but you don't have not told him who is the creator. राइट Got your point. So जब इसको नहीं पता होगा कि कौन बना रहा है, so you will not limit his imagination. So GPT's imagination is too wide. So you need to narrow it so that you can get a clean and replicatable answer. Otherwise, if you use this prompt without a role, and if you do it twice, your both answer will be totally different, or maybe some other day. So you need to make sure that for example, now up till what have we have studied now, I want to create a GPT that if a customer calls me, rather than talking to me, it talks to my GPT and my GPT answers the customer. If I don't give a role to the customer, if I don't give the role to the GPT, who is the GPT? See, he should be customer राइट inquiry officer राइट for सर राइट this product which has these features. So the role and the context. Okay. So it राइट means राइट point number 2 and point number 5 is very important. Then it will be able to give answer standardized. Otherwise, what will happen is if you say just answer the customer, so it will give a random answer, and if the same question comes again some other day, it will give a different answer. So वो standardization नहीं होगा और replicatable नहीं होगा, so that will be an issue. Any other question? राइट So next question is how to understand when to use which sort of prompt. I will give you examples for that. So these are like ingredients, like in simple words, these are raw materials. Like if you want to create a biryani, so this is mirch masala, this is rice, this is meat, this is chicken, this is spices. So you need to mix and match together to create a suitable prompt. And what is an objective of a prompt? I will tell you later on, but the simplest objective is that you need to make sure that the answer that it is giving, if you use the prompt again and again, your answer will be within that boundaries. Got the point? Okay. यस सर So let's move forward. I think there's no other query. If anyone wants to ask, do raise hand. Okay. So let's move forward. Next point is how does it work? So ChatGPT is like a full big dictionary. It has all the memory available which is in the digital form. दुनिया में जितना भी इंफॉर्मेशन थी जिस पे ये ट्रेन हुआ, all the information is there in the GPT. But you need to make sure that it tells you the answer related to what you want to hear. So it means you need to bias it towards what you want to listen. Got the point?
So, like some people don't want to hear criticism, so they try to create a statement in a way that they say that if you want to give me a credit, say, otherwise they say quiet. So it's like telling in a way that like some teachers used to say कि question end पे पूछना, ask it at the end. So और जिस irrelevant question है तो मैं class से निकाल दूंगा. Okay, so what happened is that that type of talking biases the responses of the student. For example, students मेरे पास exam review करवाने आया. Somebody student came to me to recheck the exam. I tell him that if your claim about the marks is not correct, I will deduct another 1 mark. So what it will do? It will bias the response. So they will not come unless the marks correction is bigger than the deductive marks. So example here is that when you create a prompt, you bias the response of the AI towards what you want to do. That's why in the first activity that you did, you try to tell him that it is the Faisal Islamic University, and so that it gives you the answer about the Faisal Islamic University, and then you should have told about the other things. Okay, so it means your prompt should be precise and context rich, as much context as possible. So if you think that you should, it's a waste of time to write a longer prompt, but you will understand when we'll do an activity at the end. So the answer of the AI is a probabilistic language model. So the probability that the answer is correct depends upon how precise and context rich the answer is. So it will minimize the irrelevant, undesired information. Okay. Next is creating a consistent or torture mechanism. So constraint and torture mechanism means you try to create boundaries within which the GPT should respond. So it's a constraint. If you give him so when you are creating a bias, you should also tell that don't go beyond it. Okay, so like in our when I was in school, teachers used to say don't talk in Punjabi, only to speak in Urdu. So our culture, it was talking in the schools was like this. So they were creating a constraint that they were allowing us to talk, but within a constraint. Second is a torture mechanism. Give too much constraints, or give very difficult or challenging constraints. So the question that was in the chat was how to incorporate how it is a genuine innovation. So the quality of torture or quality of constraint makes the response a good quality. So it means it's genuinely a quality of a human input that leads to a good quality output. Okay, AI has not become intelligent enough to give answer without getting the context or the constraints. So it means that it is still, if the AI is giving good answers, it means it is still the human input that matters a lot. That's why in many universities, in many academic institutions, they are not penalizing students for a normal AI value. So they allow up till 50-60% because they know that if there is a good quality answer, that can only come with a good quality prompt. Without a prompt, AI cannot give a good quality answer. It means the genuine innovation depends upon the genuine contextualization and constraint mechanism, so which include logical, contextual, and semantic pressure that you put on the GPT. Yes, do ask. Sir, like in this slide, there is a word regularization method. Yes, Now, this word regularization has application in multidisciplines. yes, yes, It could be the regularization of policies, it could be yes, regularization of yes, contexts. yes.
Now, if I want to ask GPT that it gives me the exact meaning of regularization, how should I write this? So And here if you, regularization means to make sure that every time you ask the similar question, you get the similar answer. So it नहीं means सर, मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहा था। एक सर, जिस तरह आप पिछले वाली स्लाइड पे मूव करेंगे सर, जिसमें प्रोबेबिलिस्टिक मेथड का आपने बोला था, yes. ये सर, अब जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है बायसेस द प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल्स, Hmm. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल्स को पूरा लिखना चाहिए, या मैं उसे कहूँ कि एक्ट एज अ स्टैटिस्टिशियन Yes. एंड एक्सप्लेन मी व्हाट आर द प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल्स, नहीं या नहीं इसकी जगह कुछ और होना चाहिए, no, तो रोल क्या देना चाहिए? why do you use the word probabilistic language model? It's the model itself. So here it is saying that your prompt will steer the answer towards the target output. यानी अगर आप introduction लिखवाना चाह रहे हैं, so you have something in mind what kind of introduction is suitable. सो जितना एक्सपर्ट बंदा होगा उसका स्टैंडर्ड उतने हाई होंगे एंड देन योर प्रॉम्प्ट विल लीड गाइड द जीपीटी टुवर्ड्स दैट आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड इट इज सेइंग that a good prompt will first of all make sure that there's a regularization means that you are giving it an appropriate role which is suitable to that scenario so that every time you ask it stays within those roles. It uses the same jargon, similar synonyms that are relevant to that role. And then the metaphor that use of torture means you are creating so many restrictions so that the answer that the GPT gives is within the logical, contextual, and semantic boundaries. Got the point? जी सर, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हमें वर्ड्स की, जिस तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जो टेक्निकली एसोसिएट करते हैं टू अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, जैसे Yes. प्रोबेबिलिटी का वर्ड है, Yes. वो स्टैटिस्टिक्स के साथ एसोसिएट करता है, Yes. तो हमें वर्ड से इन्फ्लुएंस होके उसको रोल नहीं असाइन करना चाहिए। Yes. No, मैं ये so समझ, you need to assign the role based upon the context. You need to know what context it. So, like first activity है, for that you need to be like a marketing expert or an ठीक, educationist. राइट सर, राइट, और बोथ ठीक है, आप एक से ज्यादा रोल भी दे सकते हैं इट्स नॉट दैट यू ओनली गिव वन रोल देयर इज नो लिमिटेशन यू कैन गिव 10 roles but it depends upon how much time you will take to think about the torture that you want to give. So it means the quality of answer depends upon the quality of torture. And it means if the answer is some innovation, it will be genuine because it depends upon the quality of torture. And the quality of torture depends upon the thought process in the prompt. Okay? So चैट जीपीटी अगर राइट, इतनी स्मार्ट होता कि वो इनोवेशन खुद कर सकता so it would have started doing innovation itself. जी, यानी जब हमने चैट राइट, जीपीटी को ओपन किया तो हमें हर रोज एक नई इन्वेंशन नजर आनी चाहिए थी. Why it is not making invention itself? Because it does not know what to do unless you give a scenario. Okay, next is राइट, quality of prompt reflects input design. So your thought process, the thinking what you want to do relates to the quality of prompt. So effectiveness of prompt is directly proportional to its quality. It as it encapsulates the human understanding of both the task requirements and the AI operational tendencies. So यहाँ पे इसका मतलब है जो मैंने units बताए हैं prompting units. So you need to mix and match the relevant prompting units and then you should also know which one you should pick. I will give you a methodology for that कि how to understand which one you should need to pick. Okay, a purely designed prompt might lead to under-specified outputs or hallucinations. Hallucinations there will be there, whereas the high-quality prompt demonstrates the user ability to torture or refine the model. Torture is the मतलब मैंने what you call it a metaphor is used here, but it's not available in this word is not there in the literature. Okay, next is aligning AI probabilistic space with human intent.
So probability, though, so AI's answer is probabilistic, but your input is not probabilistic. You are trying to get something that you want to listen or you want to read. So your prompt will make sure that your intent matches with the probabilistic answer. Got the point? So a prompt transforms a user intent into probabilistic framework that AI can navigate by narrowing down the immense latent space of the model. So AI has a very huge knowledge space. So you need to make sure that it narrows down to a relevant field. The prompt ensures that AI converges to a subset knowledge where you want to play. Okay. Yeah. So the question is ChatGPT working on training and testing data. So it has worked. When the ChatGPT was made, it was trained and tested on human literature. So that's why it knows what to give. But since the literature that was given to it was very vast, okay, and so it means and it has learnt it. So it means it has I don't think it has infinite knowledge, but it has perfect memory. It's not like human who will forget something. Okay. Secondly, it will. Yes, your comment is right that I have also explained it here. So it has perfect memory. It is unbiased, means it's not like human ki sometimes hide some information, sometimes give wrong information. So and it follows instruction without tiring. यानी आप जो रोल देंगे it will not say कि आज मेरा मूड नहीं है, I will tell you tomorrow. So it means you now have to make sure that you give him instruction properly. So what other thing people think, that they think AI is their boss, and they talk to AI as that AI has a superior knowledge, but sometimes it does not have. Contextually, it might only help you, but it might not be perfect for you. Okay, that I will tell you later on. Now, first method to write prompt is जो पहले मैंने डिस्कस किया. So it's called self-iteration method. So first write your initial raw prompt जो आपने पूछना था, and then write in front of that act as a prompt engineer to review the prompt and optimize it by asking questions to me before proceeding to its execution. So tell the ChatGPT that this is my prompt. You are a prompt engineer. Ask me any question that you want related to this domain and improve the prompt before I say to execute it. So what will happen is that when you give this prompt, okay, when you give this prompt, so it will ask you a few questions to improve what you to improve what to improve its understanding by asking you questions. Once it has understood, it will tell you the exact prompt that is now prepared. Okay, so it will show that. So for that, what we can do is, let me open an example and do it. Okay, let me close the screen share. We come back to it. Share to the screen again. Okay, let me open a website. So let me open, which one website we should open? We should open, let me open from the history. Let me open Claude. Let's see. Let me open Claude AI. So I will write a prompt. I want to make a website to show to a website so that I can communicate with my students who properly. Okay, act as a prompt engineer and ask me questions about the
first statement until what you call it? What was the name I used? Until an optimized prompt is ready. Show me the prompt and then execute it. Okay, so I pressed enter. So it will start. So I'll help you design a student communication website. The key requirements first. Let me ask you important question. Start. What are the main communication features need when telling student first? So it has asked me first question. I need to share deadlines, to share study materials, and to open a discussion forum. So I've given him three functions that I want to add. Okay. Here you can also say that I don't know, suggest me. So it has already suggested you 1, 2, 3, 4 things. But if you are not in that domain, maybe you are not a website designer, but you are a good teacher. You don't know what does it mean. You can say, let me suggest. So I have told him this. So I will ask one more question to refine your comment. Do you want students to be able to log in individually, or should this be public website? Okay, so I want that that there is one open public discussion forum, but other features should be private to students. Okay, then you can click the words. So this is the prompt. So anyone who have a question here, do raise hand. So it has started working on it. So it has created a prompt here, and it has created me HTML code. It has created me a Java code. But if you don't know how to run it, so what you can do is now that it has executed the prompt. Now it has explained what the website would look like. It has a student login page. Now, what do you want, any additional features or not? So there are two things. Either you know what is Java, you will continue it, or I will ask, I am new in website development, prepare me a proper flowchart that I can follow for this project development. Okay, so it will tell you the flowchart, and then you can continue. So it will show you a diagram. This is your diagram, how to, so you will architecture design, requirement gathering, database schema, user interface, then backend development, testing phase, development phase, maintenance phase. So it has given you then, so it has at the end asked, would you like to elaborate me of any specific phase? So now you copy it and then talk to it in terms of for each phase. This is a way nowadays people are becoming entrepreneurs by finding a suitable idea and telling ChatGPT or any other prompt website to give them process, and they follow the process. Yeah, so you can run this code on Collab, but Collab only uses R or Python. But these codes were on Java, so you need to use Java platform, maybe VS Code, or maybe any Java platform that you understand, or maybe ask the cloud to give you guidance how to execute these codes. It will tell you. Got the point? So if you think that you are unemployed and you don't have ideas, so you can just talk to ChatGPT, and within your skill set, you can take time and understand what you want to do, and then
get the process, and then spend time on it. Gradually, you will become an entrepreneur. If you have any other questions, do raise hand. Otherwise, I will move forward. सर ये जो है आपने अभी जो प्रॉम्प्ट्स टाइप किए हैं ये जीपीटी का पेड सब्सक्राइब्ड वर्जन है ना जो आप यूज कर No, रहे I हैं? use free version of Claude. If it was paid version, असल में Claude में paid और unpaid version में इतना फर्क नहीं है. In paid version there are few more features, but वहाँ पे chat limit है. मैं अभी थोड़ी सी if I had this added few more comments, it would have said that today's limit has been exceeded. तो उसने close हो जाना था. So that's why I राइट सर said तो him to create a flow chart. Why? Because if my Claude is expired for today, next day I will paste the flow chart and tell him to explain the first part. So you can create the context quickly next time because you already got the specialized prompt and the flow chart. So next day you tell him to this is the prompt and this is the flow chart. Explain the first step. इसका मतलब है सर क्लॉड जो है दैट इज प्रेफर्ड फॉर शॉर्ट शॉर्ट रिसर्चेस। No, but you buy the registered version, then you can do the long searches. जी वो तो रजिस्टर्ड वर्जन। So ठीक है सर। it's a $20 per month, I think, but in Pakistan, I think it might be cheaper. I had not checked it. Okay, yes. Any other question? सर इसकी एफिशिएंसी इसी तरह ही है ना कि हम जो डाटा इनपुट दे रहे हैं तो Yes, जितना अच्छा इनपुट देंगे उतना ही अच्छा आउटपुट बाहर आएगा। yes. तो अभी वाली एग्जांपल में तो हम इनपुट कुछ नहीं दे रहे ना, हम उसको कह रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे सिखाओ। तो आप उसने आपसे रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं कि कैसी वेबसाइट हो। जितनी अच्छी रिक्वायरमेंट्स देंगे फिर उसके हिसाब से अच्छा सिखाएगा। अगर आप नहीं बताएंगे कि मैंने वेबसाइट में क्या रखना है, तो फिर वो खुद ही अपनी गेस में बताएगा कि वेबसाइट में ये होना चाहिए, तो आप बनाना शुरू कर दो। मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि कुछ चीज़ें आपको शायद ना चाहिए हो, तो वो होगा क्या कि कुछ आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं जो मे बी आपको बाद में ज़रूरत ही ना हो। ठीक है सर। तो सेकेंडली, मैंने अपनी बारी जब मैंने पहली दफा किया था, मैंने क्या कहा था इसको कि भाई मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट भी नहीं आती, तो वाइल यू आर आस्किंग मी आल्सो टीच मी कि इसका मतलब क्या है। सो वो थोड़ा और बैकग्राउंड में चला गया, बेसिक में आ गया कि भाई आपने क्या क्या करवाना है, आप लेमैन लैंग्वेज में पूछने लग गया मुझसे। ठीक है ठीक सर। है। सर अपना क्लाउड बेहतर है या चैट जीपीटी बेहतर है एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए? देखें, रिसर्च पेपर चले, आपका कमेंट था कि कौन सा बेहतर है, मैं उसको ऐड करता जाता हूँ। टेक्निकली कई जर्नल्स ने कहा है कि आपने अगर एआई यूज करना है, एआई यूज करना मना नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि आप बताएं एआई यूज कौन सा किया है, तो आपको बताना है। लेकिन अच्छा कौन सा है, कोई सारे एक जैसे ही हैं। हाँ, तो जो लेटेस्ट एआई है उसमें अंदर खूबी क्या है कि वो एक तो उसके अंदर नॉलेज, वो बैकग्राउंड नॉलेज ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर डेटा ज़्यादा है। दूसरा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, जब मैं क्लाउड यूज़ कर रहा था तो आपने नोट किया कि साइड में वो कोडिंग भी साथ ही शुरू कर दी, यानी वो साइमल्टेनियसली दो विंडो बना दी, एक तरफ कोड हो रहा था और एक तरफ आउटपुट आ रहा था। तो इसका मतलब है अगर आपने प्रोसेसेस पे बात करनी है तो आई थिंक क्लाउड इज़ बेटर। लेकिन अगर आपने सिर्फ राइटअप लिखवाना है और फिर चैट जीपीटी इज बेटर। बट अगर आपको रेफरेंसेस की क्वालिटी भी चाहिए तो को पायलट इज बेटर। तो व्हाट आई डू यूजुअली डू इज दैट आइडिया आइडिया लेवल तक चैट जीपीटी में यूज करता हूँ। जब एग्जीक्यूशन लेवल पे आता हूँ तो व्हाट आई डू इज कि इफ इट इज अ प्रोसेस आई गो टुवर्ड्स क्लाउड, इफ इट इज अ राइटअप आई गो टुवर्ड्स को पायलट, और देर आर मोर प्लेटफॉर्म्स दैट आई यूज। ठीक है। ठीक है सर। तो थैंक यू। इट्स अ मिक्सचर, बट इट आल्सो डिपेंड्स कि आपके प्रॉम्प्ट क्या था। अगर प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं है तो जो मर्जी चैट जीपीटी यूज करो, इट विल नॉट गिव यू करेक्ट आंसर। इट विल गिव यू इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन, और वो आपके टेक्स्ट में proportion of irrelevant information will be more, so reader will not be impressed even though you have done a very good job. Got the point? नो सर। नहीं समझ आया? सो मेरा नहीं कहने का, आगे आगे। ओके ओके, चलें आगे चलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वे
कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपने क्या करना है, यू डू द सेल्फ आइट्रेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रॉम्प्ट अच्छा बना लें, एंड देन इट्स अप टू यू कि अब मैंने जो प्रॉम्प्ट उसको आइट्रेशन मेथड दिया वो एक प्रोसेस पे था। इट कैन बी सम अदर एग्जांपल, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कौन कौन से प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। सो देर आर मैनी, बट आई हैव ट्राई टू फाइंड मोस्ट पॉपुलर वंस। फर्स्ट इज राइज मेथड। इसमें क्या कहते हैं, पहले आप रोल देते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस, देन स्टेप्स, देन एग्जाम्पल। Okay, so this is called a RISE method. So example is act as a research assistant, summarize key arguments, and then of the article, you upload the article, break down into main claims, supporting evidence, limitation, practical application, perfect for structuring literature review. So this method can be used to write a literature review. So I have written a structure and an example. Then next is CIDI method, context, instruction, details, insights. So example is I am writing a thesis on climate policy, summarize the research on providing policy gaps in renewable energy with focus on past 5 years, highlight key findings, unresolved issues and potential areas for research. This gives both breadth and targeted insights. ये जिन्होंने ये बताया था उसके बारे में उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया कि उसकी क्या एबिलिटी है। PQRF मेथड, प्रॉब्लम क्वेश्चन रोल फॉर्मेट। ठीक है, द चैलेंज इज टू एनालाइज सर्वे डेटा। हाउ वुड अ डेटा एनालिस्ट रिक्वायर स्ट्रक्चरिंग फाइंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड ऑन रिस्पोंडेंट डेमोग्राफिक्स, प्रोवाइड अ बुलेट पॉइंट लिस्ट टू कीप इट ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज आइडियल फॉर टर्निंग डाटा इनटू एन एक्शनेबल आउटपुट। तो ये डेटा एनालिसिस में काम आता है। ठीक है, next is TACS method, topic, audience, constraint, structure. So I am drafting a methodology section on a survey data analysis for social study thesis. Make it suitable for professional audience. यहाँ पे audience explain होगी within 200 words. Constraint दे दिया and use subheadings for clarity. That is substructure. Great for building sections that needed structure and brevity. जहाँ पे structure की जरूरत होती है. Next is SPEC method, specificity, example, purpose, example, constraints. Generate a discussion section on impact of social media on student productivity, focus on quantitative studies, aim for a balanced view on one pro and one con and keep it under 150 words. इसमें example भी है, constraint भी है, purpose भी है, specific भी है. Okay, this is responsive, this keeps responses concise and relevant क्योंकि आपने उसको एक एग्जाम्पल दे दी है. Then ACDQ method, act, context, depth, questions. So act as a historian, socializing World War, specializing World War II. यहाँ पे अब रोल भी है और उसकी स्पेशलाइजेशन भी है. तो यानी हमने पहले जब कहा रोल देते हैं तो वो रोल कितना अच्छा होगा, रोल के आगे जब उसकी स्पेशलाइजेशन बता देंगे तो वहां से डोमेन के अंदर क्वालिटी आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल यू आर रैंक एक्ट एज अ क्वांटिटेटिव रिसर्चर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years, तो उसका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होगा रेदर देन यू राइट एक्ट एज अ क्वांटिटेटिव रिसर्चर. तो जो 20 years नहीं बता रहे तो उसकी राइटिंग स्टाइल में नजर आएगा कि उसने वो वर्ड यूज किए हैं जो डोमेन में स्पेसिफिक नहीं है. Analyze the factors that led to success of Normandy invasion 1944. अब उसने कॉन्टेक्स्ट दे दिया, आगे डेप्थ देने लगा. फोकस ऑन मिलिट्री स्ट्रेटजी, कोऑर्डिनेशन अमंग एलाइज, जर्मन डिफेंस वीकनेसेस. Explore how intelligence efforts such as Operation Fortitude contributed to invasion success. यहाँ पे अब अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आप थ्योरीज बता देंगे कि यूज फॉलोइंग थ्योरीज, मेक श्योर यू यूज सेकेंडरी डेटा, मेक श्योर इज कंट्री कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, आगे क्वेश्चन, व्हाट इज आर द लॉन्ग रन implications फॉर नॉर्मंडी इन्वेजन इन टर्म्स ऑफ पोस्ट वॉर जियोपॉलिटिक्स. ठीक है, so this is the way you write a prompt in this example. Next is create. This is biggest and I think the best one. Character, request, example, adjustment and extras. Character, request, example, adjustment, type of output and extras. So अगर आपने कोई स्पेशल चीज डालनी है, you put it in extras. So assume the role as a marketing strategist. Request character आ गया. Develop a promotional campaign for a new friendly water bottle targeting young professionals. ये request आ गई और example भी आ गई. Highlight similar successful campaigns like those by Hydro Flask. ये adjustment में आ गई.
tailor a campaign to emphasize sustainability and affordability, ये एडजस्टमेंट में है. To avoid overly technical language, keep the tone casual yet professional, ये type of output आ गई. And a 200 word campaign proposal with bullet points, type of output summarizing key strategies. Include suggestions for hashtags and potential tagline for product launch, the extras होगी. So you see how it is designed. If you have question here, you can ask. I will let you give you 1 minute to absorb the information. You can सर ये ask जो anything. आपने पॉपुलर प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर्स हैं ये मतलब आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं या आपने ये किसी बुक से भी रेफरल लिए Yes, सर? I collected it from different literature sources. These are some best practices used. It's not that राइट आपने same order ही use करना है, but what it जी is including is that these are some short names that you can remember. Otherwise, you can mix and match. Like if I want to use rise and you can skip the example. वो होगा क्या, एग्जाम्पल नहीं होगी, बट इट विल स्टिल वर्क. बट these are the best practices that people have used. They given them short names so that you remember in your head. So next time आप, for example, मुझे create वाली याद है. So next time whenever I want to write a good prompt and I don't have time to talk to ChatGPT again and again, I will spend my time in writing a good prompt and I will follow any one of that method. So yeah, all of them are equally good. I have given a instructions in front of each example कि ये किस किस रोल में अच्छा प्ले करेगी. Otherwise, create is the best one because it has more inputs. ओके. और बाकियों सर में इसमें बाकियों में एक्स्ट्रास की जगह नहीं है. मे बी यू डोंट नो, यू वांट टू ऐड समथिंग बट यू डोंट नो हाउ टू ऐड. तो क्रिएट में एक्स्ट्रास में सब कुछ रख दो जो रह जाता है. जी. सर अब इसमें सर अभी तक तीन सिनेरियोज बने हैं. एक तो ये कि जिसमें आपने हमें जैसे फर्स्ट पे प्रैक्टिस करवाई, एक पैराग्राफ दिया और आपने बोला कि मिमिक इट. हम्म. और उसके बाद ये किस क्राइटेरिया में फॉल करता है? दूसरा है सर कि जैसे आपने अभी रेफर किया कि आपके पास कोई आर्टिकल है, आप उसको समराइज करना चाह रहे हैं, हम्म. तो उस आर्टिकल को हम अपलोड करते हैं, वो इसमें से किस में फॉल करेगा? इसमें मतलब उसमें हमने कांटेक्ट करना है इसमें आई सीआईडीआई थिंक, में. लेकिन यू कैन यूज इट इन एनी वन. इन आप क्रिएट में भी एक्स्ट्रास में बता देना कि दी बैकग्राउंड इज अपलोडेड इन द अटैचमेंट. राइट सर, राइट. ठीक है. अब बात है कि व्हेन आई वाज गिविंग यू अ रोल फॉर मिमिकिंग, इन रियलिटी देयर विल बी नो मिमिकिंग बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स द आउटपुट लुक लाइक. ये तो मैंने यहाँ बस सिर्फ चेक किया कि लेट्स से आई गिव यू अ टारगेट, हाउ यू फॉलो इट. The output is actually in your head. So राइट सर. but the AI is there is no output in its head. It will give you a probabilistic answer. So your prompt will make sure that the distance between your answer that is in your head and the probabilistic answer, the good prompt will narrow down the distance. Okay. ठीक है सर. करेक्ट. राइट सर. थैंक यू So, सर. so if you spend time in properly writing the prompt, you will spend less time in cleaning the output. कि उसने जो बात बताई आप उसमें से फालतू चीज़ें निकालनी हैं, कुछ चीज़ें रेलिवेंट हैं, कुछ चीज़ें मे बी एक्स्ट्रा हैं, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि आंसर इज टू लॉन्ग. इट हैज़ गिवन यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ओके. शुड वी मूव फॉरवर्ड? जी सर. इसमें सर अगर हमने फर्ज करें उससे एक आउटपुट ले लिया है, अब उसमें फिर हमें सिमिलैरिटी का भी इशू आता है. तो जब हम लेते हैं तो क्या हम उसको ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं कि प्रोवाइड द आउटपुट विच कुड नॉट बी ट्रेस्ड इन तो सिमिलैरिटी एक्चुअली और देखिए, सी समथिंग लाइक दैट? आइडियली चैट जीपीटी इज यूज फॉर आइडिया जनरेशन, not to work as your assistant to write something. दिस. So, if you think that it is your idea generation partner, then you will not copy paste the output, rather than you will understand and then write your own answer. If राइट you सर. want to copy paste, then you need to make sure that where will be using it, they don't object. Now, there are two types of objections.
similarity and AI. You can beat the similarity by giving it a good role, that you are a good, rather than I will say, assume the role as a marketing strategist, I will also write marketing strategist and a copy editor or a proofreader. And then in the special extras, I will make sure that it is uniquely written. मैं ये नहीं कहूँगा plagiarism beat करे, because it does not know what is plagiarism. I will just say make it a unique writing. राइट Got it? सर। Okay, so your adjustments and extras will make it different, but it will still count at AI. अब जहाँ आप यूज करें वहाँ AI is not an issue, then you can use it as it is. For example, you are writing official reports that are submitted as a hard copy. They will never do it, check it for example, you are giving your comments on a government budget. तो आपने यही से लिखवा लिया है, तो जब वो हार्ड कॉपी में आ जाएगा तो नो बडी विल चेक इट अगेन. और यू आर डूइंग इट टू राइट कोड्स, सो कोड्स आर नेवर चेक्ड बिकॉज कोड्स आर सेम. वो तो आप यूनिक कोड्स तो नहीं लिख सकते, कोड्स तो आर देयर. गॉट द पॉइंट? जी सर, करेक्ट ठीक है. सर, थैंक तो यू। इन इफ आई एम ट्राइंग टू मेक अ वेबसाइट, आई डोंट केयर कि वो प्लेजराइज हो, बिकॉज आई एम डूइंग अ प्रोसेस, नॉट अ राइटिंग समथिंग. ओके. So how to find the data sources using AI? So AI cannot give you can give you data sources, but sometimes if the data is popular, Google can give you answer more accurately because it has a directory, but the ChatGPT is guessing or thinking. So it can give you the expected variable names and expected institutions, but it might not tell you the web link. ठीक है? Unless it's very popular and it knows where it is. Okay. Now there are two popular tools that you can use for prompt engineering. One is AI PRM plugin that you can install on your internet, the browser. I will show it right now. Okay, let's what we to do is I will close it here and come to this. I will open this. When you open this website, it will ask you to install the plugin. So when you open up your Chrome, so in the Chrome, in my Edge, the AI PM plugin is there. So what I will do now, when I open my Chat GPT, ठीक है, मेरे Chat GPT में क्या फर्क नजर आएगा? It is similar to what you have seen, but when I load it again, let me let it load. वो plugin read होने दें. Yeah. So see, so इसने क्या किया? This AIPRM has already ready-made chat prompts. It has more than 1,000 prompts there. So I want to write so it will never work. It will never work because Google the Turnitin is very smart. So don't go for human written, because what has happened is that um, this talks about breaking the similarity, not breaking the AI. So there are many other prompts like write a complete book. So when I click this, so the background में prompt available है जो इसको बता रही है कि you have to write a book. Now you give a context and it will create a book. Okay, you want to write a blog which outranks the other blogs in the blog so that you can earn money. You can do it like this. There are many other. Okay, you are YouTube script generator कि आपने वीडियो बनानी है तो क्या होनी चाहिए. You want to create something. So there are many prompts here. So there are the topics are there. So you like I want to work on generative AI. So it will show you these prompts. Okay, so this is a way कि जब आपने complicated task करना है so your prompt will be very long. So if you use this plugin, so most of your long prompts are already there. Remaining you have to give. So this is one method. Second method, that is prompt genie. So I will copy this and okay, so in this, it's not 100% free, but you can
say write it here and then it will tell you a best prompt for that. तो ये prompt genie platform है, but it's not 100% free. आप डेमो में काम करेंगे, but you can check how to make good prompts here. Okay, let's go back to the slides. Okay, next prompt that I found out is with this. This is, if you use this prompt, you will create a human-like output. This is write an engaging and punchy introduction for a blog article. You can write a rather than blog article, you should a research article. Please alter between short and long sentences, क्योंकि इंसान randomly लिखते हैं, कभी long sentence होते हैं, कभी short होते हैं, तो ये randomization लेके आ रहा है. अवॉइड जार्गन और क्लीशीज. सो जो चैट जीपीटी है वो कुछ क्लीशीज डालता है सेंटेंस में, ये जार्गन यूज करता है. मेक इट एंगेजिंग बट सुटेड फॉर प्रोफेशनल ऑडियंस. गिव स्पेसिफिक actionable information to provide deep value to readers. The tone and voice should be professional but slightly conversational, जिस तरह इंसान बातें करते हैं. Use bustiness in the sentences, randomizing both long and short sentences, create more human-like flow. Use human-like writing, explanation points and first person perspective. जो सलमान साहब के प्रॉम्प्ट में था कि वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव नहीं था. तो द इंट्रोडक्शन शुड इंक्लूड rather इंटरेस्टिंग स्टैट कोटेशन और समथिंग टू हुक द रीडर. ठीक है, दिस इज अ प्रॉम्प्ट जो आप पहले डालेंगे एंड देन यू से व्हाट यू वांट टू डू. ओके, सो व्हाट विल हैपन इज व्हेन यू यूज दिस प्रॉम्प्ट, तो आपका राइटिंग बहुत बहुत इन मोस्ट केसेस इंसानों की तरह, मतलब जिस तरह इंसान लिखते हैं उस जैसा नजर आएगा. ठीक है, हाँ ये एआई को ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन आपके राइटअप में पर्सनलाइजेशन और फर्स्ट पर्सन कॉन्टेक्स्ट, और मैंने जान के आई एन वी को भी कहा कि कभी कभी यूज कर दे तो ह्यूमन लाइक व्यू आएगा रेदर देन कि मशीन ने लिखा. तो इट विल मेक इट मोर पर्सनलाइज्ड. इसके आगे आप लिखें एक्ट एज अ फला 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 एंड राइट समथिंग, जो भी आपने इसको कहना है. नेक्स्ट इज कि अगर आपने लिटरेचर रिव्यू करवाना है, व्हाट कुड बी अ गुड प्रॉम्प्ट. तो लिटरेचर प्रॉम्प्ट की एक एग्जांपल है. तो फर्स्ट इज यू अपलोड पीडीएफ रिसर्च पेपर्स इन जीपीटी. यानी आपने पहले नेट से आर्टिकल्स ढूंढ लिए हैं जो रेलिवेंट है, यू अपलोड देम इनटू जीपीटी एंड यूज द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट. I am conducting a literature review and I have uploaded several papers. I need you to analyze and organize the information into structured table as following. तो एक टेबल बनाएगा. फर्स्ट इज टेबल एंड लिंक टू पेपर. इनसाइट्स की इनसाइट्स द पेपर, उसकी एक समरी कर देगा दूसरे कॉलम में. थर्ड कॉलम में एक कंक्लूजन दे देगा. फोर्थ में मेथड बता देगा. फिफ्थ में लिमिटेशन दे देगा. सिक्स में कंट्रीब्यूशन बताएगा. सेवन में समराइज एब्स्ट्रैक्ट होगा. एक रिजल्ट आ देगा एट्थ कॉलम में. नाइन्थ कॉलम विल बी लिटरेचर सर्वे व्हाट द लिटरेचर हैज डन. देन प्रैक्टिकल implication, then objectives, then findings, then research gap, then future research, then independent variables, data set, population sample, challenges, application. आगे instructions भी दिए special. What are those? Process each upload paper and fill the table as requested details. Provide the table as well organized format and can be copied to Excel and Word. And if any information is missing or unclear, please write not specified. So you can reduce the columns or add more if you want. So it will give you a table. सर ये कितने पेपर ये हम मल्टीपल पेपर्स अटैच कर सकते हैं? Yes, multiple. Or you can upload one and this provide and do again. जितने ज्यादा देंगे, the chat GPT will take that much time. And maybe the free chat GPT does not allow many, maybe one or two. And then the paid version you can add as many as you want. But उसकी भी per day limit है. Yes, SciSpace does it. But the issue is that if you want to understand how SciSpace does it, that's why I've given you this. There are many other platforms other than SciSpace that does it, but in this training I am guiding you how SciSpace has done it. तो उन्होंने बैकग्राउंड पे प्रॉम्प्ट को फीड कर दिया हुआ है एंड यू जस्ट ऐड इन द आर्टिकल्स एंड जस्ट टेल कि कॉलम में क्या क्या चाहिए. तो द प्रॉम्प्ट इज डिजाइंड ऑटोमेटिकली. In this prompt, what you can get extra is that you can maybe in the introduction, maybe in all the points, you tell him to focus on certain thing. In SciSpace, you cannot. Okay, so and Right. you might do it, but maybe in free version may ability now. Got the point?
So this is the thing that you can do here. Okay. Any question here if you want? If anyone want to ask a question here? No one? सर साइज स्पेस में उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, लेकिन इलिसिट के अंदर इलिसिट भी कर लेता है, तो कंसेंसस भी कर लेता है, साइज दोनों स्पेस में भी कर। वो देयर आर तो सर मेनी। ऑलरेडी बना के यस, तो ये भी बनाएगा, टेबल लेकिन टेबल बनाया। लेकिन यस, सारे मैंने 3-4 प्लेटफॉर्म बता दिए, सब करते हैं काम, लेकिन आवर ऑब्जेक्टिव वाज टू अंडरस्टैंड उन्होंने किया कैसे। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि उसने ये प्लेटफॉर्म जो बनाया है, जो पीपल आर यूजिंग इट नाउ, ही इज एन एंटरप्रेन्योर हु इज अर्निंग मनी बाय यू यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म, एंड सम पीपल आर यूजिंग पेड वर्जन। सो हाउ दे बिकम एंटरप्रेन्योर, they understood how to create a prompt so that people will think that your website is very good even though at the background there is a very good prompt। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की वजह से उनका बिजनेस बन गया, एंड यू आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म, somebody are some people are also paying for it, so they are earning out of it। So all अच्छा everything सर, behind is मैं everything behind is a good prompt। ठीक है सर। So सर it अगर means मैं पेपर अटैच करता हूँ और उसके साथ में ये पहला वाला, जैसे आपने सेंटेंस लिखा है, आई एम कंडक्टिंग ए लिटरेचर रिव्यू, और उसके बाद में पहले 5 पॉइंट या पहले 6 पॉइंट दे देता हूँ, yes, तो वो फिर इस प्रॉम्प्ट को ऐसे ही एग्जीक्यूट करके yes, टेबल में फॉर्म वो में देगा छः मुझे। वो 6 कॉलम बना देगा टेबल में। कॉलम्स कह ठीक दिया ना उसको है। मैंने, यहाँ तो 21-22 कॉलम है ना, राइट वो 6 सर। बना देगा। राइट सर। सो ये तो टेक्निकली उन लोगों के लिए है ना, जो द पीपल हु ट्राई टू डू SLR, स्ट्रक्चर लिटरेचर व्यू, दे नीड अ टेबल। बट इन रियल लाइफ यू माइट नॉट नीड अ टेबल, यू जस्ट से दैट मैं क्या करूंगा कि ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इनटू अ पैराग्राफ फॉर ईच आर्टिकल, और मैं कहूँगा पैराग्राफ में ये चीज़ें चाहिए मुझे, तो वो हर आर्टिकल के लिए एक पैराग्राफ बनाएगा जिसमें सब चीज़ें कवर हो रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। यस यस। हाँ सर, आपने सिस्टमेटिक रिव्यू की बात यहाँ पे की है, तो क्या सिस्टमेटिक रिव्यू में इतनी ज़्यादा चीज़ें एट ए टाइम हो सकती है? क्योंकि ये सर 12 पॉइंट्स है तकरीबन। नहीं तो आपकी मर्जी है, जितने मर्जी डालें वो आपने SLR जितना जितना बड़ा बनाना है उतनी चीजें चाहिए ना। SLR में तो और भी चीजें होती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी होती हैं कि कितने ऑथर हैं, किस मुल्क से हैं, ठीक है, जो बिब्लोमेट्रिक रिव्यू के लिए भी होता है। तो लेकिन SLR में पेपर थोड़े भी तो होते हैं। SLR में यूजली पेपर मैक्सिमम 20 इसके करीब करीब होते हैं। तो इसका टेबल बन जाएगा तो कितनी बड़ी चीज बनेगी, नहीं तो ऑन अदर साइड देर आर 50 आर्टिकल्स, तो फिर उतने ही क्वेश्चंस कम हो जाएंगे ना। हम यूजली जब सर अपना, यस यस। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली जो हम मॉडर्न लिटरेचर लिख लेते हैं तो उसमें हम तकरीबन, एक बात होती है, 3 4 5 हम रेफरेंसेस दे देते हैं। तो इसमें यह है सर कि लेट सपोज एक बंदे ने मेथोडोलॉजी एक यूज़ की है लेकिन उनके वेरिएबल डिफरेंट है, तो उनको हम एज ए सेम वेरिएबल बेस करेंगे और उनको इसी तरह जो है लाइन लिखेंगे, या उनके रिजल्ट्स वगैरह है उनमें से 3 4 का हम एट ए टाइम लिख देंगे जैसे नहीं थीमेटिक में देखें, होता है सर। ये तो अभी हर आर्टिकल को अलग अलग टेबल बना रहा है ना, देन इट्स अप टू यू कि आपने उसको इंटीग्रेटेड लिटरेचर व्यू बनाना है, या उसको स्ट्रक्चर लिटरेचर व्यू बनाना है, या उसको आर्टिकल समरीज बनाना है, या उसको क्रिटिकल रिव्यू बनाना है। दिस इज योर ओन वर्क। यहाँ से ये इसको वो कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर बना के दे रहा है। ठीक है, तो आगे थैंक यू, थैंक यू सर। आपकी प्रॉम्प्ट ही बताएगी आगे, यानी पहले ये टेबल बनवा लें, फिर उसको कहेंगे यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन नाउ डू अ क्रिटिकल रिव्यू। तो उसमें आप कह देंगे जी मेक अ पैराग्राफ ऑन ऑल द स्टडीज विच हैव डन यूज द सिमिलर डिपेंडेंट वेरिएबल और सिमिलर मेथड एंड गिव अ रीजन व्हाई दिस मेथड इज यूज्ड। तो वो उन्हीं आर्टिकल्स में जाएगा और वो इंफॉर्मेशन निकाल लाएगा। समझ आ गई बात? यस सर। या तो अगर आप पहले बताएंगे तो फिर भी कर सकता था, लेकिन अगर आप पहले इसके बाद करेंगे तो यू विल नो व्हाट टू आस्क। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कि आप चैट जीपीटी को अपना PhD स्टूडेंट भी बना सकते हैं, कि उसको कहें कि तुम मेरे PhD के स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ, मुझे पेपर बना के दो या मुझे थीसिस लिख के दो। कैसे कहेंगे? सो द प्रॉम्प्ट इज context, you are a PhD student on this topic conducting a literature review. You want to identify core theories, models and conceptual frameworks relevant to this field. Instructions: explore the foundation theories, models and scholars widely
a reference in this area. Details focus on the literature from reputable academic sources, especially peer-reviewed journals. Consider recent advances in 5 years. And cite what is the primary theories and concepts. So आप उसको रोल दे रहे हैं. And whether you are in philosophy or biology or engineering, this structure will help you build a thorough, well-rounded literature review that stands out. आपने उसको अब जो आपने बात की कि कैसे लिखवाना, अगर इस तरह कहेंगे तो वो लिटरेचर भी बनाएगा. आपने उसको टेक्निकली रोल दिया है कि वो एज ए स्टूडेंट की तरह सोचे. ठीक है. कई लोगों ने, मैंने एक एग्जांपल देखी थी, एक बंदे ने इसी तरह ही स्टूडेंट को कहा कि फलां प्रोजेक्ट है और उसका डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट अपलोड करवाई. उसको कहा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए मुझे फंडेड प्रोजेक्ट का प्रपोजल बना के दो, और उसकी बेस पे ही वॉज एबल टू विन फंडिंग. ओके, let's move forward. So, proposal making. How to make a research proposal. I'm working on a research proposal on specific topic. The impact of AI example है दी. I need to give well structured proposal that include following sections. I need a title, I need introduction, I need literature review, I need research gap, I need objectives, I need research questions, I need methodology, I need significance, I need timeline, I need references. Please assist me driving a structured proposal by starting with a compelling research title, concise and engaging introduction. Once these are drafted, guide me step by step through each subsequent section. It will start chatting. Please ensure that the tone is academic, the language is clear and concise, the content is tailored to a specific audience, to the PhD committee. If you need more details about the such topic, so feel free to ask. तो वो AI उससे बातें करेगा और it will create a proposal. Now, जो आपको पहले टास्क मिला कि वो कॉल फॉर पेपर लानी है, तो यू कैन यूज दैट दिस मेथड कि आप वो कॉल फॉर पेपर को कॉपी करें, उस वाले को जो उसको टारगेट किया, या उसके लिंक को. यूजली चैट जीपीटी लिंक ओपन नहीं कर सकता, तो यू कॉपी इट एंड पेस्ट इन अ वेबसाइट in a word file and then talk to it using this method. ठीक है. हाँ, इसमें कुछ चीज़ें कम है. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड आल्सो, इफ आई वुड बी राइटिंग, आई वुड आल्सो ऐड context that you are expert in that domain. For example, वो journal HR का है, so I will be telling him that you are an expert human resource manager with experience of writing research papers for 10 years. Then I will say this, ताकि वो context narrow down हो जाए, ताकि उसका टाइटल भी relevant हो, इंट्रोडक्शन भी relevant हो, लिटरेचर रिव्यू भी relevant हो. Got the point? यहाँ किसी को क्वेश्चन हो? Anyone who need to ask anything here? Okay, let's move forward. ये रिसर्च प्रपोजल मेकिंग हो गया. नेक्स्ट इज बिजनेस आइडिया. काफ़ी लोग बिजनेस आइडियाज भी इसके तरीके से बना लेते हैं. सो डिस्कस अ पॉसिबल लिस्ट ऑफ बिजनेस आइडियाज इन चैट जीपीटी. इट विल टेल यू सम बिजनेस आइडियाज. आप डोमेन नैरो कर दें, बिकॉज आई वांट टू बिकम ए ऑनलाइन बिजनेस. आई वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस एंड गिव मी बेस्ट लिस्ट ऑफ lucrative business idea which requires minimum investment, and then ChatGPT will give you a list. ओके और जितना अच्छा आप कॉन्टेक्स्ट देंगे कि मेरी ये कैपेबिलिटी है, तो उतने ही अच्छे बिजनेस आइडियाज आएंगे. देन यूज क्लाउड टू आस्क कि वो जो उसने आइडिया दे, फॉर एग्जांपल उसने आइडिया दिया कि मेक अ वेबसाइट. नाउ टेल क्लाउड, वो प्रॉम्प्ट वहां से मिल जाएगी पहले वाले प्लेटफॉर्म से. टेल क्लाउड दैट दिस इज द बिजनेस आइडिया, to now give me a complete code for this app if it is an ID based idea, or a process flow if it is not. So it will give you detail कि पहले स्टेप में ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें. Once the program is developed following the Claude, you can open syllabi.io. So this what they do is it will give you tell you how to it will develop you a campaign for social media so that you can market it, and you can also schedule it. Means that syllabi.io can automatically share your Facebook post, LinkedIn posts, so you can automate your marketing process, and so that start में you start sharing relevant information online. Got the point? So that's why people are saying that if you are not AI ready, you will not be able to start any business. So people are learning AI to become a businessman, not to write articles.
because article writing तो in maybe in few years AI will write articles automatically. You don't have to think, give a good prompt. उसको अगर आपने सिर्फ सब्जेक्ट बता दिया तो खुद ही आर्टिकल भी लिख देगा. So it means if you are using energy to write business research papers, so what will happen is that that skill might be outdated in few years. Rather than you understand, if you are a teacher, you use ChatGPT to create engaging lectures, engaging activities, engaging case studies. You, if you are a funded project, you engaging, you write a good proposal. If you are want to become a businessman, work on good idea, then follow Claude and its processes to launch your business. Okay, so these are some ideas. If you have any question here, please raise hand. अच्छा सर, इसमें हमने जो है अगर कुछ इंटरव्यूज करने हैं तो इंटरव्यूज करके उनको अगर हम वर्बेटम में कर दें तो इसको हम थीम्स बनाने का कहें Yes. तो वो भी इसमें हो जाएगी। यस, आप उसको रोल देंगे पहले कि यू आर दिस पर्सन एंड यू हैव डन दिस इंटरव्यू एंड दिस इंटरव्यू फॉलोड दिस थ्योरी. नाउ based upon this theory and this method, these are the responses, and I have added a serial number for each respondent. Now make a table of all the themes that are extracted. You can do it, but the issue is कि जितना आप ऐसा काम करवाएंगे कि जो आप खुद बाद में सोचेंगे कि मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, तो वो एआई आएगा. तो बेहतर है इसके आप काम करवाएं, लेकिन यू हैव टू राइट इट इन योर वर्ड्स इन लेटर ऑन एनीवेज. ओके सर। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कॉन्टेक्स्ट कितना अच्छा उसको समझाते हैं कि भी ये थ्योरी थी, ये क्वेश्चनेयर था, ये मेथड अप्लाई हुआ, ये रिस्पॉन्स आए, तो आई वांट टू डू दिस. गॉट द पॉइंट. इवन ये आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करवा सकते हैं. यू अपलोड द एक्सेल फाइल एंड टेल हिम दैट दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आई वांट टू डू दिस एस्टिमेशन मेथड, क्रिएट अ पाइथन और आर कोड फॉर इट एंड आल्सो गिव मी आउटपुट. ये सारा काम करके देगा. गॉट द पॉइंट. आर और पाइथन में एक्सपर्ट है, अदर सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट नहीं है. मतलब प्रोग्राम डेटा एनालिसिस वाले, वैसे तो जावा और वेबसाइट में भी है. यस, प्लीज आस्क. सर मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस है आर और पाइथन के कोड से रिलेटेड, तो अक्सर जो कोड्स आती हैं वो उसमें एरर आ रही होती है. और एक जो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने डेटा के अंदर एजम्पशंस चेक करना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी एजम्पशंस, मतलब टेस्ट अप्लाई करना चाह रही हूँ और देखना चाह रही हूँ कि मेरा जो डाटा है वो कौन कौन सी एजम्पशंस को फुलफिल करता है और कहाँ पे इशू आ रहा है, तो सर उसको कैसे उसका प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए? तो और एक एक आप एक अगर आप अपना सॉफ्टवेयर यूज करें देन इट विल टेक टाइम, बट फास्टर वे इज दैट यू ओपन गूगल कोलैब. से गूगल कोलैब में लेट मी ओपन अ न्यू फाइल, या मैं कोई एग्जिस्टिंग खोल लेता हूँ. लेट मी ओपन अ नोटबुक. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड रेलिवेंट वन जो मुझे बतानी आ जाए. फॉर एग्जाम्पल दिस फाइल. ओके, सो either you have already have a code or you start by telling ChatGPT. For example, in Google Colab, in runtime you can change the runtime from Python to R. तो यानी अगर या Python में करना है या R में करना है. So when you create a new code file, you see there are two options: write a code or generate with AI. So when I press generate with AI, I will write a prompt here that I want to read the Excel file. सो वो लिंक देगा कि कैसे रीड करना है. तो आई वांट टू डू क्वांटाइल रिग्रेशन, तो वो कोड देता जाएगा. और सपोज आपने कोई कमांड दी और उसमें एरर आ रहा है, लेट्स से कि मैं ये वाली चलाता हूँ, इसमें एरर आएगा. सो आई रन दिस. ये वर्क कर रहा है, हाँ अभी लोड हो रहा है. ओके, so it will give an error. So Copilot has another feature is that if there is an error, you can, there's a button, you press it, it will give you, so there's an error, so there's a button explain error. So when you press this, it will open ChatGPT and ask it, and it will tell you, okay, what are the amendments required. So it has told me that the library was not loaded. So the suggested code has added the load the library. I will copy this code and paste it here. It will work. ठीक है, इस तरह करेक्ट हो जाता है. ठीक है. हाँ, बात है कि वाई समटाइम्स इट गिव्स यू एरर बिकॉज
in other case it should not give error. It gives error because it does not know आपने पहले कितना काम कर लिया है. So when I use ChatGPT or any other platform for coding, I make sure that my existing code जो मैं कर चुका हूँ, I upload that code and also paste the error जो आया है and tell him that how to solve it. So वो बताता है कि आपकी कोड में फलां फलां जगह पे जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके स्पेलिंग फर्क थे या कोई लाइब्रेरी मिस है तो उसको पता चल जाएगा. अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे तो वो because in it's R and Python is a programming language, there are multiple solutions for multiple problems. So what will happen is it will give you every time give you different way to solve it. Okay. So Google Colab gives you correct code. Yeah, so it take its time out when you give a larger iterations. So for that, what you try to do is you make different line for smaller units. कि आप हर छोटे सेट के बाद नई लाइन में आ जाए तो make it a smaller code so that it takes lesser time to gives you the answer. ओके एंड कोलैब का फायदा ये है कि व्हेन यू से उसको पिछले वाले कोड नजर आ रहे हैं सो इट ऑलरेडी नोज द कॉन्टेक्स्ट तो वो जल्दी पहुंच जाता है रेदर देन यू यूज द अदर प्लेटफॉर्म्स. ओके okay let's move forward. I will talk about some examples that you should do it after this class. First is revise the poorly written prompt. So एक activity है. So example is के improve a vague or unclear prompt. Okay. So क्वेश्चन आया कि LSTM में बेस्ट वर्किंग ऑप्टिमाइजर कौन सा होगा. आई हैव नॉट वर्कड ऑन LSTM but what I can guess is that you tell him in LSTM there is a test that checks कि कौन सा ऑप्टिमाइजर अच्छा है. So उसका एक टेस्ट होता है and then you can tell him to optimize to find a best optimizer. So उसके लिए कोई ना कोई टेस्ट आपको सजेस्ट कर देगा. I have not worked in this domain so I cannot give you an correct answer. So what is give a random prompt and then you have several methods. You improve it. For example, okay, this is the last session, last 40 minutes. So what we'll do is we have only few 2 or 3 slides left. Let me complete it. Then we will do the activity and then I will allow you to share the screen and then we will discuss one by one. Okay, so this is one activity that you can do. Okay, from after having this training, you can improve the way you write prompts. Second activity is that you improve the prompt strategy. Like you have seen other prompts and you see, for example, there are 3 types of prompts here, and then you check which strategy they have used so that you can mimic their style. Okay, so try to match each prompt to strategies. Okay, the second activity. Third activity is create a prompt for a scenario. So develop an effective prompt based on real world scenario. The scenario is that the company wants to launch an AI powered chatbot for customer service. Develop a prompt to generate FAQs for the chatbot. ठीक है. अब यहाँ पे रोल वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि FAQs का जवाब अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो इट विल रैंडमली गिव अनदर क्वेश्चन एंड कस्टमर विल बी अनॉयड कि वो ए पूछ रहा है और वो Z आंसर दे रहा है. सो act as a customer service expert, create a list of top 10 FAQs for a chatbot in the e-commerce sector. It includes concise and friendly responses for each question. ठीक है. अब यहाँ फ्रेंडली क्यों जरूरी है क्योंकि यू नो व्हेन यू कॉल द कस्टमर सर्विस यूजली कस्टमर वैसे ही गुस्से में होता है. सो इफ देयर इज अ ह्यूमन इन फ्रंट ऑफ इट सो समटाइम्स ह्यूमन का सब्र खत्म हो जाता है. सो व्हाट दे डू इज दे यूज अ चैटबॉट एंड टेल हिम टू स्टे कीप फ्रेंडली. Okay, so this is 3 activities and there's another one. Analyze the results of a prompt. So you write a prompt already written जो हमने आज मैंने जो काम किया कि चेक के जो आउटपुट आई है जो दैट यू वांट टू सी इज इट देयर. यानी आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप पहले दिन ही प्रॉम्प्ट राइटिंग एक्सपर्ट होंगे बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइड that you have written a prompt and you got the answer and you think something is missing.
you write the prompt again and add that thing that you want to add it in the prompt. For example, I will give you an example. I was writing a paper on role of Islamic banking on monetary policy uncertainty. Okay? But the problem was literature does not have this paper. The paper the literature has is role of monetary policy uncertainty on banking. तो जो भी मैं prompt लिख रहा था वो opposite answer दे रहा था. I wanted to see how Islamic banking is useful, but it is giving that uncertainty disturbs the banking. So then what I did, I wrote the theory in the prompt. I said that Islamic banking have the contractual agreements. There is more certainty there. If the people are committed for the until the contract is not completed, there are assets there. So what happens is that it leads to consistent policies and leads to certainty. तो उसको वो जब समझ आया and then it start to write. So this is the thing that you should need to see if the output is aligned. What you want to get, are you getting it from the prompt? And then how could we improve? What is the missing ingredient? Maybe the role is not there, or maybe you need two roles, or maybe you need to tell a certain structure, or maybe you need to give a certain input, maybe upload a Word file or a PDF, or maybe copy paste some paragraph. For what I did sometimes that my supervisor gave me a paragraph that this is an idea, write a paper. Then what I did, I used that paragraph and write a prompt that this is the background idea and you are this person. Now give me a table of content. What should I do with it? Encourage group discussion to share insights based on learning from this class. So this will do in the next section. So what we need to do is in the last take the topic of research that you discussed selected earlier. Use any prompting style and write an introduction. यानी आपने जो पहले कॉल फॉर पेपर की बेस पे कुछ इंट्रोडक्शन लिखा है. Now based upon the what you have learned in this class, write a better prompt and get the answer again. Then I'll give you 10 minutes. Do it. Then raise your hand. I will let you share the screen one by one and you give me your feedback how good the answers were, how successful you were able to improve the introduction. So that confidence will let you understand that now you can become a researcher. कि आपको कॉल फॉर पेपर मिल गया, आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया, how you now become you are able to write any topic research paper. Only requirement is you know some little bit about that topic, okay, and then give you feedback. So I will turn my mic off or I will stay quiet for 10 minutes, do this work, and then I will let you share the screen and जितना टाइम हमें अवेलेबल होगा उतने लोगों के डिस्कशन कर लेंगे. If you have any question, you can ask now. Others, please start working on it. सर अगर मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूँ कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च पेपर लिखने जा रहा हूँ और मुझे ये चेक करना है कि क्या उस पे फर्दर या ऑलरेडी कोई रिसर्च हो चुकी हुई है या नहीं, तो हाउ शुड आई टेलर द प्रॉम्प्ट दैट इट गिव्स मी एन आइडिया दैट द टॉपिक इज गुड वन तो और टेक्निकली तो टेक्निकली तो दिस क्वेश्चन इज लिटरेचर रिव्यू क्वेश्चन. हमें तो लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है ना कि काम हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ. यस सर, यस So, सर, एग्जैक्टली so it या means you need to either make a relevant prompt that does a literature review or use a relevant ChatGPT tool that can do a literature review. और इसके लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा सर जी, So it means चैट जीपीटी या और कौन? technically ChatGPT free one does not have access to internet. So it means it will never help you in this. Either you get the paid one or you use the illicit or consensus or size space. They can tell you. You just write the topic and it will give you papers. राइट सर. Yes, if you use the
ChatGPT to create a new scale. Technically, you need to validate the scale, but you cannot say that ChatGPT has made it, so it's already valid. You have to give a statistic. So ChatGPT can tell you how to validate it. So ask him to give me process, and I would recommend that you need to stick to the requirements that are mentioned in each methodologies. So if the requirement is you need to use the validated scale, and if you are trying to make a new one, so what you should do is that you can first of all make a paper for a new scale and then validate in that paper and then uh, go on. And Python only does analysis. So you can tell GPT to tell me how to validate this new scale in Python. But validation does not only includes the analysis, it also includes the logical write-up or methodology. So you need to follow whole the process. So this is the research method, not the scale reliability. So these all methods you can tell AI to write you method the derivation for each step. So it will tell you how it is done it. ठीक है रियान। Yes. नहीं नहीं, पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। So another 5 minutes I will start discussing. So try to complete it. सर इंट्रोडक्शन की वर्ड लिमिट। You can you would like to write it as long as possible because आपने बाद में उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, तो जितना ज़्यादा बताएगा रेलिवेंट बताएगा उतना ही काम आएगा. Yes, I'm planning in future to do a workshop on how to do programming in R using prompt engineering. So that you can do, so for the people who don't know R coding, they can do it quickly in R, or use the chat GPT to do the R process. So I will share the details in the group. So anyone who has done it, please share your screen. Please raise your hand so that I will allow you to share the screen and then we'll start discussion. Okay, let me allow you. Okay, so first one, Salman Saab is sharing. Let's see what does he has to present. So try to be concise and so that we can give other time to others. सर ये मैंने उसको ये प्रॉम्प्ट लिखी। सबसे पहले तो मुझे रिसर्च आइडिया नहीं था, रिसर्च टॉपिक नहीं था। उससे पहले मैंने टॉपिक जनरेट करवाए हैं सर। हम्म तो मैंने टॉपिक आइडिया के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा है ना, तो यू कुड हैव यूज दैट जहाँ पे ऑलरेडी टॉपिक्स अवेलेबल हैं एंड उसके लिए एक बैकग्राउंड स्टोरी भी गिवन है, सो यू हैव टू राइट लेस. वो मैं देखता हूँ सर, अनशेयर कर रहा हूँ। ओके. यस ताहिर. सो पहली वाली दिखाएं और फिर नेक्स्ट वाली.
ये फर्स्ट वाली है। प्लीज अनम्यूट योर माइक। नो सर, ये जो है ना फर्स्ट वाली में जो है ना, मैंने इससे इंट्रोडक्शन मांगा कि तकफुल इंडस्ट्री में जो है ना पाकिस्तान में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों नहीं है। तो पहले हम्म। मैंने जस्ट इसको मतलब जो है ना वो इंट्रोडक्शन इसने मुझे दे दिया। लेकिन फिर मैंने सेकंड में इसको कहा कि मुझे साथ रेफरेंस भी चाहिए। तो फिर जो है ना इसने साथ वो रेफरेंस भी दिए और एंड में वो रेफरेंसेस भी शो कर दिए हैं। ठीक। सो प्रॉम्प्ट में और इम्प्रूवमेंट नहीं करने की कोशिश की, इसको थोड़ा बिग करें ना, आपको मैंने इतने फ्रेमवर्क दिए हैं तो ट्राई टू मेक इट बिगर। इसने जो रेफरेंस दिए हैं आप चेक करें सारे नेट पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर ये नहीं करते उनमें से कुछ, तो इसका मतलब अभी भी हेलुसिनेट कर रहा है ना, बिकॉज आपने इसको अभी तक रोल नहीं दिया कि ये वाला काम क्यों कर रहे हो। तो जब रोल दोगे तो आई विल गिव यू एग्जांपल। लेट्स से कि इफ यू टेल मी टू राइट एन essay ऑन poverty. If I'm not a subject expert, what adjective that I will use? I will use poverty is bad. Bad is not a subject or context specific keyword. ठीक है. So if you tell him that write a note on poverty as an expert in development economics, तो फिर relevant keywords use करेगा. ठीक है. सो इफ यू रीड दिस योर सेल्फ, आप इसको रीड करके देना देखना, यू विल अंडरस्टैंड। इनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बाकी सब आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं। दिस नथिंग यूनिक हेयर कि कोई नया रीडर पढ़ के कहे कि हाँ इसने कोई नया पॉइंट पिक किया। बट व्हाट दे विल से इज, ये बातें तो सब कहते हैं कि तकाफुल दो टाइप्स हैं, तकाफुल ऐसे होता है, तकाफुल ऐसे होता है। तो इफ यू वांट के जब आप पेपर लिखें तो रीडर कहे कि हाँ इसने कोई नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट या नया गैप पिक किया है, सो यू हैव टू नैरो डाउन योर प्रॉम्प्ट एंड टेल हिम समथिंग जहाँ से वो स्टार्ट करे। आपके इस पैराग्राफ इट्स नीट इनफ, बट इस पैराग्राफ में प्रॉब्लम क्या आएगी कि दे विल से कि इसमें नया तो कुछ नहीं है, सो व्हाई शुड वी फॉलो इट। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको रिविजिट करो एंड देन व्हाट्सएप ग्रुप में फीडबैक देना। एनीवन एल्स? ओके सर। यस, यहाँ पे अपना रोल बता, मैंने जो 5-6 मेथड बताया, विल शेयर द स्लाइड्स इन द ग्रुप। तो वो जो प्रॉम्प्ट के मेथड्स हैं उनको फॉलो करना। एंड प्रॉम्प्ट में जितना मेहनत कर लोगे बाद में उतना ही कम टाइम लगेगा उसको नीट करने में। Anyone ओके सर। else तो want to स्टॉक share? Okay, okay, no problem. Yes, please explain your process also. सर कैन यू हियर मी राइट नाउ? Yes, हाँ सर, मैंने ये टॉपिक लिया था एनर्जी पॉवर्टी एंड स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसी के ऊपर। yes. सर इसमें मैंने प्रॉम्प्ट से पहले इसको इन्फॉर्म कर दिया कि स्पेशल इशू कॉल है, और स्पेशल इशू का टारगेट जो ओवरव्यू है वो मैंने इसको मेंशन कर दिया था। Mm-hmm. इसके बाद में मैंने अपना प्रॉम्प्ट लिखा है कि वो किस किस टॉपिक के ऊपर उसको मेंशन करना है, लाइक फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एनर्जी इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, Mm-hmm. ये सब कुछ एग्जांपल के हिसाब से। Mm-hmm. फिर मैंने प्रॉम्प्ट में ये भी बोला है कि ट्राई टू गिव सम स्टैटिस्टिक्स, डेटा, Mm-hmm. और वट एवर अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज देयर। Mm-hmm. अब इसके बाद में सर मैंने इसको ये बताया कि अभी मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए। Mm-hmm. तो Yes. इंट्रोडक्शन के लिए ब्रीफ ओवरव्यू, सिग्निफिकेंस, पर्पस ऑफ द स्टडी, और सर ये जनरेट हुआ है इस पे। तो आपने इस ये वाला प्रॉम्प्ट अभी अभी लिखा है कि इस ट्रेनिंग सेशन से पहले किया? मैंने होमवर्क दिया था ना सर, Yeah. So it means you आपने already वो know. मैच। आपने फिर अभी दोबारा भी किया? हाँ ये तो अभी किया है सर, मैं चला गया था बीच में। नहीं, तो जो अभी किया है और जो होमवर्क था, डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज इम्प्रूवमेंट? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है सर। क्या क्या पॉइंट पिक किया आपने? क्योंकि जो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे इट मींस यू विल रिमेंबर इट नाउ। सर आपने जो बताया था मुझे स्टार्टिंग में कि प्रॉम्प्ट से पहले उसको आपने कहा था कि टॉर्चर वाला कुछ आपने बताया था स्लाइड के यस, अंदर, यस। मैंने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि मेरा स्पेशल इशू कॉल है और इसी के आसपास होना चाहिए। बाद में मैंने कीवर्ड्स रिपीटेडली, जो कीवर्ड्स थे वो उसको फीड कर दिया प्रॉम्प्ट में।
कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एनर्जी सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट इसके ऊपर है। फिर और भी ज़्यादा नैरो कर दिया कि मतलब सिग्निफिकेंस बताना है, पर्पस बताना है, ना कि कुछ रैंडमली जनरलाइज करके बता दिया टॉपिक को। ठीक है, so it means you were हाँ able to improve it based upon the discussion that we did. जी सर, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है सर, मतलब अगर आप देखोगे तो कि कुछ कुछ चीज़ें इसने बहुत ही अ, वो लिखी हैं। देखिए टेक्निकली आई मतलब विल इसमें आई विल आई विल हाँ गिव यू पॉइंट्स कि चैट जीपीटी फ्री वन, अगर आपका ये फ्री वन है या नहीं आई डोंट नो। फ्री वन है सर, ये उसने बोल दिया कि यस, तो ये द हाँ फ्री वर्जन डज नॉट हैव एन एबिलिटी टू गिव यू रेफरेंसेस. So rather than ओके tell him to give you references, I would like to मैं अगर आपकी जगह लिखता तो I would like to make sure कि वो जितने भी theoretical names या theoretical linkages build कर दे as many as possible. जितने मिलेंगे उतने ही फिर मैं किसी और relevant जीपीटी में जाके references ढूंढ लूंगा. For example, I will tell him to not tell him to write what do you call it references. I tell him to make sure the theoretical foundation is there. Then मैं उसके जो आंसर आएगा ओके आई विल गो इन को पायलट एंड टेल को पायलट कि ये जो आउटपुट है connected with references, and then he will give me relevant references because GPT does not have an ability to give references. तो एक तो आपको जो इसने references दिए हैं most of them hallucinate हो रहे होंगे, तो most chances हैं कि वो गलत है. बिल्कुल हाँ सर। ठीक है. सेकेंडली जो मैंने स्लाइड्स में बात की कि यू यू पिक थिंग्स दैट यू थिंक आर मिसिंग एंड देन यू राइट अ प्रॉम्प्ट अगेन एंड ऐड दैट थिंग इन द प्रॉम्प्ट. ओके सर। ठीक है, तो आइटरेटिव हो जाए. सर इसमें जी यस. सर, मुझे इसमें ये पूछना था कि आफ्टर 10-15 प्रॉम्प्ट्स ये वापस से वो ऐसे कमेंट्स दे देता है कि आपका GPT-4 फ्री लिमिट है। नहीं नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि यू शुड हैव योर टू ईमेल एड्रेसेस और आप यूजर चेंज करें. एंड यू डोंट, व्हेन यू थिंक योर चैट्स आर गोइंग लॉन्ग, यू रेदर देन आस्किंग थिंग यू मेक श्योर योर प्रॉम्प्ट इज गेटिंग बिगर. आप ये ना कहें कि अगले प्रॉम्प्ट ओके में उसको पिछली वाली बातें याद हैं. तो फ्री वाले वर्जन में समटाइम्स अच्छा द आंसर दैट इट गिव्स हैज अ वर्ड लिमिट. तो वो क्या करता है, अगर ओके आंसर बड़ा आ रहा है तो प्रॉम्प्ट में से कुछ चीजें स्किप कर देता है. ओके ओके फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बार काम करना था. मैंने अब जैसे पहले भी क्वेश्चन आया कि आर के कोड में मसला आता है. आई वॉज ट्राइंग टू राइट एन आर कोड विच वॉज मोर देन 200 लाइन्स. So what was problem was that its answerability is only 100 lines. So what it was doing is कि मेरे कुछ फीचर्स को निकाल देता था और कुछ नए को ऐड कर देता था. So it was mixing and matching. So it was not helping me in writing the codes. Then what I did, I told him कि मैंने एक प्रॉम्प्ट है, मैं गिव मी गिव मी 3 or 4 sections of this command and then answer section wise. ओके ठीक है. व्हाट हैपेंड वाज कि हर सेक्शन में 100 वर्ड 100 लाइंस की लिमिट थी. सो 300 लाइंस कवर हो गई और मेरा कोड कंप्लीट हो गया. सो यू हैव टू, ठीक है इफ यू आर सर, इसको यूजिंग द देखता फ्री हूँ। वन, देन यू हैव टू बी मोर स्मार्ट बिकॉज इट हैज अ वर्ड लिमिट. ओके सर। ओके. हाँ जी, इसने जी शेयर किया. नाउ यू कैन आस्क. प्लीज ओपन योर माइक, वी कैन नॉट हेयर यू. अमीन साहब आपका माइक बंद है. और किसी का रेडी है तो रेज हैंड कर ले. अमीन आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके माइक में कुछ मसला है तो काइंडली सॉर्ट इट आउट एंड वी कैन डिस्कस विद समबडी एल्स मीनवाइल. Anyone else who want to ask or share?
अमीन आप दोबारा ट्राई कर लें इफ इट वर्क्स, अदरवाइज आपके माइक की वजह से हमें कुछ सुन नहीं रहा। सर आवाज आ रही है? Yes, I can hear you. I will share the slides in the group, हेलो and the group is open, and I will also share if I have more materials. जी, हेलो सर yes, आवाज I आ रही can. है? Yes, आ रही है। हाँ सर सर सर, ये मैंने कल जो आपने बोला था कि आप अपने लिया करंट इशू को ढूंढ लेते, मैंने ढूंढ लिया ना एमडीपीआई पे। जी, तो मैंने कल इस पे ट्राई किया ना। अब जी। मैंने इसमें से ये जो मैंने किया ना, जो ये 5-6 इशू है ना उसमें, हम्म, तो मैंने ये चैट दे दिया, उसको बोला मैं मुझे इन पे रिसर्च टॉपिक टाइटल दे देना। तो उसने हम्म, मुझे 5-6 टाइटल दे। फिर मैंने इसमें से एक उठा लिया, पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कार्बन न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन। हम्म, ये मैंने उठा लिया। अब जब मैंने ये इसको उठा लिया तो उसमें मैंने, चूंकि मैं असल में करता हूँ मशीन और डीप लर्निंग का काम, तो मैंने उसको बोला उसमें ये भी ऐड कर दे। हम्म, फिर उसने मुझे ये चीज़ दे दिया है। हम्म, तो अब उसने मैंने उसको बोला कि मुझे चलो ठीक है, तो ठीक हो गया, अभी मुझे इसके मुताबिक वो दे दे, वेरिएबल्स दे दे। हम्म, ये इंस्ट्रक्शन दे दिया। और ये उसने जो है ना, उसके बाद मैंने उसको बोला कि मुझे उसका जो डेटा है ना वो मैं कैसे फाइंड करूंगा। उसने मुझे बताया कि तुम इन चीज़ों से डेटा फाइंड कर सकते हो। yes, तो आगे उसने बोला है कि, फिर मैंने उसको बोला चाहिए कि मुझे ऐसे कर लो कि मुझे सिर्फ 5 वेरिएबल चाहिए, राइट पॉसिबल वेरिएबल्स दैट कम्स अंडर दी स्टडी, जो इस हम्म, स्टडी के अंदर आते हैं। उसको मैंने बोला मुझे वो स्पेसिफिक वेरिएबल दे दे। उसने हम्म, मुझे कार्बन एमिशन दे दिया, consumption दे दिया, ये चीज़ें दे दिया। हम्म, फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे कर लो, मुझे मुझे 1-2 वेरिएबल दे दे अपना इन द कार्बन एमिशन, just like let's two dependent variable like carbon dioxide and energy consumption, हम्म, and give me 5 dependent variable. Let's relation with the dependent variable and also find easily from the World Bank database. हम्म, तो उस ये चीज़ें दे दी है। हाँ अब ठीक है। मैंने उसको बोला बस ये तो उसने दे दिया। अब मैंने उसको बोला कि मुझे गिव मी इन टेबल फॉर्म। उसने मुझे ये कोड दे दिया पाइथन का। फिर मैंने इसको कोलैब पे रन करके ना, उसने मुझे इस तरह टेबल दे दिया है। यस, तो फिर मैंने उसको बोला प्लीज राइट सुटेबल टाइटल्स फॉर द above variables also mention ml and dl। अच्छा जी, तो अच्छा सर जी, तो दोबारा मैंने कर लिया। तो इस तरह मैंने फिर उसको बोला कि ओके तो ठीक हो गया। अब मुझे जो है ना इन चीज़ों को मैंने जो आप अभी जो आपने बताया प्रॉम्प्ट ना, उसके बाद हम्म, मैंने वेरिएबल भी दे दिए, एम एल भी दे दिया, डीप मतलब डीप लर्निंग और एम एल का भी बता दिया कि इनके अंडर रह के मुझे इसका हम्म, एब्स्ट्रैक्ट दिखा दे, बता दे, हम्म, और उसके अंडर बता दे। तो उसने मुझे ये इंट्रोडक्शन दे दिया है। इंट्रोडक्शन में उसने ये चीज़ें अकेला अकेले दे दिया। फिर बाद में उसको मैंने बोला कि नहीं, मुझे चाहिए इन पैराग्राफ फॉर्म। हम्म, पैराग्राफ फॉर्म में मुझे ये चीज़ें दे दी हाँ है। जी। अब तो इसके आगे आप मुझे बताएं कि अच्छा साइट साइट रिलेटेड वर्क्स दिखाएं ना, फिर आगे बात करते हैं। फिर ये हमारे दे पास दिया। 10 मिनट रह गए हैं, तो जरा स्पीड करें जरा। हाँ अच्छा सर ठीक उसने ये साइट सिटेशन भेज दिया है। तो इस तरह मैंने मतलब अपना काम सही कर लिया। अच्छा सर, उसके बाद मैंने बोला कि मुझे इसमें से जो कंट्रीज होते हैं ना जो सूटेबल है इस स्टडी के लिए, वो मुझे बता दे। उसने मुझे ये कंट्रीज बता दिए। फिर मैंने उसके बाद जो है ना उस पर कहा बस ठीक है, मैं चाइना पे करता हूँ। तो चाइना पे मैंने इसको कॉपी कर दिया, फिर उसने मुझे चाइना पे ये सब कुछ दे दिया है। हाँ जी। तो सर अभी जो आपने प्रॉम्प्ट बता दिया है, उससे मैंने अभी रन नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह वो तो बहुत मतलब नहीं नहीं, मुझे इससे मैं बताओ, और भी वो हो गया, मैं मुझे ये इंशाल्लाह बताओ कि अभी जो ट्रेनिंग हुई है, क्या आपको अब ये समझ हाँ आया कि चैट जीपीटी से बातें कैसे करनी है? हाँ सर, मुझे बहुत सी चीज़ें में जो हाँ। लिमिटेड थे अब ना वो मैंने आपके प्रॉम्प्ट में एक मसला ये था कि आपने जो बार बार बातें पूछी हैं, तो ये जो फ्री वाला हाँ चैट जीपीटी है इतनी देर में ख़त्म हो जाता है। आपने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। हाँ हाँ, सर ये मैं पेड मैं हाँ। पेड है ना। तो इसका अगर मैं आप ये सारी बातें एक बारी में बता देते, यानी एक बड़ा प्रॉम्प्ट लिखते, तो कम टाइम लगना था। ठीक है, टाइम बचना था। हाँ सर सेकेंडली, हाँ जब आप बार बार बातें कर रहे हो तो क्या पता वो पिछली वाली बात से वो डिट्रैक्ट भी हो रहा है, तो उसको थोड़ी सी इनएफिशिएंसी भी आ रही है। ठीक है,
तो अच्छा सर। आपने अब क्या ट्राई करना है कि ये सारा काम जो आपने इतने स्टेप्स में किया है, आपने एक ही प्रॉम्प्ट लिखना एक बड़ा ही। सारा, और सारा काम उसमें करवाना है। अच्छा सर, ठीक है ठीक है। ठीक अच्छा है। सर, मुझे एक जी सर, मुझे एक कंफ्यूजन है इसमें। यस। जो हम ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग करते हैं, इसमें हम करते हैं अक्सर ये फोरकास्टिंग करते हैं, जी। और जो है ना उधर classification करते हैं। हम्म। तो क्या इसको हम जैसे हम स्टेटा को इस्तेमाल करते हैं इकोनॉमेट्रिक्स, उसमें टेस्ट होते हैं ना, जैसे हम एडीएफ करते हैं जो आइडियल नहीं है, इसमें हम टेस्टिंग करते हैं, ये करते हैं, इसमें ये जी चीज़ें जी। नहीं होते। तो इनकी जगह हम क्या मतलब इसमें ऐड करते आपने हैं? जब जब आपने एम एल और डीएल लफ्ज लिखा ना, तो आपने उसको सही तरह नहीं बताया। आप उसको कहते कि आप मेथडोलॉजी भी, एक बार उसे मेथडोलॉजी भी बात करते हैं कि भी कहना मैं आई वांट टू डू वर्क ऑन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मेथडोलॉजी। टेल मी कि ये जो मेरा वेरिएबल्स का स्ट्रक्चर है, इसको मशीन लर्निंग में अगर हम लेके जाएंगे तो मेरा मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क और ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे। फिर अच्छा सर, सही आपने सही। बताना था कि क्योंकि मैं मशीन लर्निंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मशीन लर्निंग में मोस्टली फोरकास्टिंग की बात होती है। तो हाउ टू हम्म, राइट इट इन अ वे कि जो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो फोरकास्टिंग से कनेक्ट हो जाए। अच्छा सर, सही समझ सही आ गया सही। आपको। ठीक। हाँ। आपने एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन और करनी थी, जिसमें आपने देखो बड़ा अच्छा काम किया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्री क्लियर की। तो आपको मेथडोलॉजी भी क्लियर करवानी थी। हाँ, अच्छा सर, आपने हाँ बिल्कुल पूछना सर, था कि ठीक ठीक, सही सही। लिटरेचर में इन वेरिएबल पे कौन कौन सी मेथडोलॉजीज हुई हैं, और जो मैंने टॉपिक है इस हम्म, टॉपिक पे अगर मैं मशीन लर्निंग और एमएल और डीएल करना चाहता हूँ तो व्हाट मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड। ओके सर, ओके सर, समझ ओके आ गया। ओके ओके, तो सही वो सही, एक ठीक लेयर अगर सर। वो भी ऐड कर लेते तो आपके राइटर में एमएल और डीएल भी आ जाना था। ठीक है सर, थैंक यू, सही सही। ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स हु वांट टू शेयर, अदरवाइज वी हैव 6 minutes। एनीवन एल्स। My suggestion is that ChatGPT is for ideation. It can help you in making your idea, not giving you references. It is not efficient in giving references. So if you want to write in a way कि आपको references भी मिले, you can use Copilot। ठीक है। तो Copilot can give you references। ठीक है, वो भी 4-5 देता है। You have to ask again to give you more। ठीक है। So that's the thing here। Think it as कि this is a platform where you can clarify your idea, your process, your strategy। not कि मुझे कोई बनी बनाई चीज मिले और मैं रेफरेंसेस डालूं और मैं लिख लूं। It is not efficient in that। It is efficient in idea making, not write up, finalized write up। ठीक है। For Copilot, I will share the screen. I will tell you how to do it. Okay, let me open the screen here. So when you open your Internet Explorer, so मैं usually Edge use करता हूँ. When you come in Edge, so let me tell you. So you go in a new screen, and this is the button. When you press this, it will open a Copilot Chat GPT। Okay, and in this GPT, it is connected to internet. You can ask anything, it will give you references। Okay, so this is a platform, and if you want more you can use elicit.org। if you ask it, it will give you references, and it is a good one। It gives you good references. Then there is consensus। if you ask it, it will give you references, but not it will not make a paragraph। Illicit, it can, dono, both of them can make paragraph, but their free version does not make a good paragraph। paid version make good paragraph। and then um there are many more, but I remember these two। okay, so you can use these to find references। anyone else, और कोई क्वेश्चन हो? अदरवाइज आई थिंक वी शुड देन conclude for today। सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है। yes। आजकल काफ़ी ये इकोनोमेट्रिक्स में एआई एमएल मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, yes। तो उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं सर? मतलब चैट जीपीटी या फिर को पायलट, so या उसको technically my इंटीग्रेट my करके? my next training will focus on specialization, but how can you use it? You just open collab and upload your data file and tell him that this is my dv and this is my iv, do the machine learning।
अगर आपको आपने वो पढ़ा नहीं हुआ तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो इन चैट जीपीटी एंड लर्न अबाउट इट, दैट गिव हिम अ सिनेरियो दैट दिस इज माय डेटा फाइल and this is my theory. Tell me how machine learning and machine learning algorithms can be applied and what innovations can be done. आप पहले सीखें. If you know it, then just go and collab and tell him to do this, apply this algorithm, apply SVM or apply random forest. वो कर देगा. It's just number crunching. It's like a calculator. You just tell him to do 2 plus 2, it will do 2 plus 2. It's not a human that will say, सर आप yes, सर आप एक ऐसा वीडियो क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप, जैसे अभी आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर हमने yes, असाइनमेंट किया है, तो yes. वैसे आप डेमोन्स्ट्रेट करके बता दीजिए जिसमें आप अपने पर्सपेक्टिव से समझा सको कि कहाँ कहाँ पे प्रॉम्प्ट्स में हम मिस्टेक करते हैं, इंट्रोडक्शन में या फिर एलआर में Actually, I will, I या फिर will, एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, I will try to do. But फ्यूचर के जो वर्कशॉप होंगे उसमें। yeah, हाँ sure, sure. I will try to make smaller videos, or I will try to make another bigger workshop which covers that. Today it was about the fundamentals of prompt engineering. I didn't go very deep into perfectly writing an introduction. I was focusing on if you want to get some output, how to go near to what you want. But actually, इससे आगे जाना है तो then you should be a subject expert. If you want that, I want to write it on clean energy and I have a call for paper. And if you don't know what is clean energy, then no matter how good prompt you write, you will not get a good answer because you don't know what to ask. So what you need to do is there's another training that I will be giving. It's about how to find a methodological gap. So when you know what's the methodological gap, then you tell ChatGPT in a prompt that this is a gap that I'm targeting. Write me introduction that leads to this gap. Get the point? जी Then सर, जी सर। then it means it's not, it's that you should know the end of the tunnel first, so that you tell GPT to dig the road so that you can reach the end of the tunnel. If you don't know the end of the tunnel, you will be lost in the within in the mountain कि आप टनल डिग कर रहे हैं और आपको पता नहीं बाहर कहाँ से निकलना है. Got the point? So try to, if you want to become, you want to excel using AI, you want to also try to learn more about the subject in which you are trying to do the research. Got it? जी सर, थैंक यू सर। Okay. So I think I should conclude it. I have also showed you how to do Copilot. Copilot can do a literature review, but it's about how to torture. जितना अच्छा prompt लिखेंगे उतना अच्छा literature review होगा. जैसे मैंने एक example दी. Okay, I will share the PPTs in the group. So thank you very much for today's session. There is less than 1 minute and it will be closing, and we will see you soon in other platforms. Thank you. Thank you, sir. Grateful.